this session. Sir, I invite you to the dais. Kindly come and grace this session. Next, I request Professor Dr. Diwakar sir to come on the dais and grace the session. Good morning, all of you. Well, In the meanwhile, I am pleased to inform the audience that one of our professors, Professor Vishwanath Singh, former head Field Department of Economics and former Dean, Faculty of Social Sciences, Magadh University, Bodh, Gaya, is among us. I welcome you, sir, on behalf of the college. Thank you. Sir, you may proceed. thank you. Again, good morning, one to all. We are going to start in a very interesting program here. Now we have two speakers, but first of all, we are going to discuss about whether sustainable development is sustainable or not. What are the challenges? We have Professor Diwakar. We know Professor Diwakar is a renowned professor in this sector, and respected Diwakar sir, I am requesting you, please take 30 to 35 minutes to put your presentation, and then we will have the discussion, because it is allocated that 45 minutes allocated for us, and we should complete our talk program in the given time. Thank you. एड्रेस का वो दिया हुआ था लाइट जो Honorable Chair, Professor Vishwanath Singh, Professor Harikesh Babu, and all dignitaries on the dais and other side. Very good morning to all of you. From yesterday onwards, I have been thinking how should I proceed when we are talking of the sustainable development. I thought I should start with questioning the sustainable development. My next slide. My presentation outline is initially we will discuss sustainable development perspectives, major macro policies in context of Indian economic development, growth experiences and inequality in India, inequality in income and wealth, inequality in access to land holdings and assets, inequality in consumption, health and education, global inequality syndrome, and then summing up and imperatives. I think yesterday we have been discussing, perhaps it will be easier if I am allowed to speak in Hindi. Chairman sir. Yeah. Yeah. So next slide. When we have to discuss sustainable development perspectives, मैंने इसे इस तरह समझने की कोशिश की है कि नेचर, क्रिएचर और टेक्नोलॉजी के बीच में जब हार्मोनियस रिलेशन होगा तो वो सस्टेनेबल होगा,
और कल कुछ रोमांटिसिज्म हो रही थी ट्रेडिशनल लिटरेचर को लेकर के। आई विल टेक यू टू दैट रोमांटिसिज्म। उपनिषद में कहता है पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णमदः पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे समझ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इससे बढ़िया कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता। संपूर्ण में से संपूर्ण को निकालने के बाद संपूर्ण बचा रहा। दैट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप नेचर से उतना लेते हैं कि वो आपका भरण पोषण भी करता है और वो खाली ही नहीं, वो पूर्ण का पूर्ण बना रहा। तो यदि हम वो लिटरेचर से इंसाइट देते हैं और तब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो नेचर, क्रिएचर और टेक्नोलॉजी का जो सिम्बियोटिक रिलेशन है वो हमें बना के रखना होगा। और वो हमें उपनिषद से मिलता है कि कैसे बना के रखना है। नेक्स्ट, इसके लिए अप्रोच क्या हो, इसमें वेरिएशंस हैं। रेडिकल अप्रोच वाले कहते हैं कि नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, सब कुछ बदल जाए। लिबरल कहते हैं कि नहीं, मिला के चलो, जो है उसको भी रखो और जो बेहतर कर सकते हो वो भी करो और दोनों मिलकर चलो। अगर हम इन दोनों को लेकर चलते हैं, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं अप्रोच के तौर पर में, नेक्स्ट, तो भी हमें समझना ये होगा कि ये वैक्यूम में ऑपरेट नहीं करता है। जब आप रेडिकल या लिबरल किसी भी तरह की बात करते हैं, कल अनायास चर्चा हो रही थी, कई बार संदर्भ में भी आया, चाइना की बात आई, अन्य विकसित देशों की बात आई, तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर चाइना की बात आप करते हैं तो चाइना के सिर्फ इंडिकेटर की बात आप नहीं करेंगे, उनके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, उनके पॉलिटिकल सेटअप, उनके सेटअप गवर्नेंस, उनकी डिलीवरी एंड आउटकम की बात करनी होगी, तब आप उसके डेवलपमेंट इंडिकेटर्स की बात करें। भारत के अगर वेलफेयर की बात करना चाहते हैं, वेलफेयर स्टेट की बात करना चाहते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में फिर फॉर्म्स, कंटेंट्स, बेसिस एंड सुपरस्ट्रक्चर, इसकी बात करनी होगी। एंड सो इज द केस विद द डेवलप्ड इकोनॉमी एज वेल। नेक्स्ट, अब इसको समझने के लिए जीव को केंद्र, मैंने कहा था कि नेचर, क्रिएचर एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, तो क्रिएचर को अगर केंद्र में रख के और तब नेचर और टेक्नोलॉजी के साथ अगर बात करना चाहते हैं तो देयर मस्ट बी अ रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज ऑफ कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड प्रोडक्शन। Start with production, then we'll have exchange, then there is distribution, and finally the consumption. So if you take this kind of relation, always remember this relation with this Upanishad words that the Purnasya Purnamadaaya Purnamevavasishyate. वो पूर्ण ही रहेगा। ये सारा संबंध ऐसे बना के आप रखेंगे कि फाइनली इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, वो वैसे का वैसे टिकाऊ बना रहेगा नेचर से हम। और यही संदर्भ था जिस पर मैं आदरणीय हरीश बाबू ने कहा कल कि गांधी ने जिस व्यवस्था की बात की थी और कुमारप्पा ने जिसकी बात की, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस की, अहिंसक समाज रचना की, ऐसे एक नहीं, हमारे बहुत मनुष्यों ने ये बात कही है। नेक्स्ट, हमारे भारतीय बोध में, इंडियन परसेप्शन में बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन वो बोध है, थोड़ा हम मदद चाहते हैं आपसे इस मामले में कि बोध और चेतना में बहुत फर्क है। हमारे पास बोध तो इसका था कि पूर्ण में से पूर्ण निकालेंगे तो पूर्ण ही बचा रहे, लेकिन इसकी चेतना हमारे पास नहीं है। अगर इसकी चेतना हमारे पास नहीं है तो हम उसको अंधानुकरण करते रहे दुनिया की चीजों का और अपने को नीचे गिराते रहे। परिणाम क्या निकला? चाहे वो कच्छ हो, भुज हो, अभी उत्तराखंड का हो, या दुनिया के विभिन्न भागों में जहां कहीं विनाश हो रहा है, वो प्रकृति के अंधानुकरण या टेक्नोलॉजी के अनक्रिटिकल एडॉप्शन के कारण से, अंधाधुंध दोहन के कारण से, अनक्रिटिकल एक्सप्लॉयटेशन के कारण से ये चीजें बदली। लेकिन हमारे बोध में ये बात नहीं थी, ऐसी बात नहीं है। बोध में थी, आप शुरू करिए, अयम निजा करो विज्ञान लोग उदार करता नाम तो दुनिया ही हमारा परिवार है। तो जब दुनिया ही हमारा परिवार है तो अंतिम आदमी भूखा कैसे है, वो कुपोषित कैसे हो, उसके पास कपड़े कैसे नहीं है, वो अस्वस्थ कैसे होगा?
वो तो था, चेतना नहीं। दूसरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु कामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। किसी भी जगह कोई दुख नहीं होगा। और बुद्ध ने तो कहा था, दुख है तो दुख का कारण है, कारण का निवारण। और उतना ही नहीं, हर एक प्राणी में सेल्फ डिसिप्लिन होने की बात भी है। जब गांधी होम रूल या हिंद स्वराज में सेल्फ रूल की बात करते हैं तो कोई अपनी बात को नहीं करते। हमारे परंपरा में जो ज्ञान से उसको कहते हैं कि आत्मत सर्वभूतेषु जः पश्यति पंडित, उससे पहले है, उससे पहले भी है, पर द्रव्ये सुदोषवत्, आत्मत परदारेषु पर मातृवत परदारेषु पर द्रव्ये सुदोषवत्, आत्मत सर्वभूतेषु जः पश्यति पंडित। आज मातृवत कहाँ है? हम महिलाओं को हम कहाँ देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? वेर इज वुमेन? तो उस बोध का चेतना से कोई रिश्ता है क्या? फिर आगे बढ़िए तो गीता में कहते हैं, जो कल जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, यावत् भ्रियते जठरम तावत् सत्वं निधेयम्। आप उतना जरूर खा लीजिए जिससे कि आपका पेट भरे। उससे अधिक अगर आप लेते हैं तो वो चोरी है और उसके लिए दंड होना चाहिए। जब कभी प्लूटो ने मोरल स्टेट की बात की थी तो शायद इस संदर्भ को समझ के किया था। मार्क्स ने जब कभी सुपर ह्यूमन फाइनेस्ट ह्यूमन कल्चर सोसाइटी की बात की थी तो इसकी बात की थी। गांधी ने जो फाइनेस्ट कल्चरल सोसाइटी की बात विलेज स्वराज में की थी तो इसको समझ के किया था। अगर उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़ते तो दंड का विधान था जिसकी चर्चा मैंने कल की, आज नहीं करूंगा। हम बढ़ते गए हैं आगे। बुद्ध का पंचशील हो हमने अनदेखा किया, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, असंग्रह। इसमें असंग्रह सबसे महत्वपूर्ण। हमने संग्रह किया इसीलिए चोरी भी की। असंग्रह होता तो मिलता। ये जो आशंका हुई कि नहीं हमको नहीं मिलेगा तो उसने चोरी की या छीना या हिंसा की या लूटमार की। अगर आप असंग्रह नहीं करते, असंग्रह को अपनाते तो नौबत ही नहीं आती। तो बुद्ध को भी हमने नकारा। कबीर ने कहा था, साईं इतना भी दिए जाने कि तुम समाज में भी भूखा न रहूं दारू भूखा जाए। हमने अपने संत मनुष्यों की सारी बातों को अनदेखा किया है और हम बात सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कर रहे हैं। आगे बढ़िए तो नारायण गुरु को लड़ना पड़ गया। सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ दक्षिण भारत में अन्याय के खिलाफ 16वीं शताब्दी। आगे महात्मा फूले, पेरियार, अंबेडकर तक चले आइए जिसने सामाजिक लोकतंत्र की बात की। गांधी का अहिंसक समाज की बात हुई और अहिंसक समाज का जो पहली अवधारणा है गैर बराबरी नहीं होगी तभी अहिंसक समाज होगा। गैर बराबरी भी होगी और हिंसा भी नहीं होगी, ये नहीं होगा। विनोबा ने जब वर्ग समन्वय की बात की थी तो धर्माधिकारी ने कहा कि वर्ग भी रहेगा और समन्वय भी होगा, ये नहीं हो सकता। अगर समन्वय चाहिए तो करना पड़ेगा। इससे अलग मार्क्स ने क्या कहा था? स्टेटलेस सोसाइटी की बात तो भी वही कहा था। और इस बात यही कारण था कि विनोबा को महामुनि करते, मार्क्स को महामुनि मार्क्स करते। और गांधी कहता था कि मार्क्स से पहले तो सोशलिस्ट हम हैं। तात्विक रूप से अगर हम देखें तो बोध में हमारे पास ये चीजें थी, हम चेतना में नहीं आए। कालांतर में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है। 3 रिवॉल्यूशन महत्वपूर्ण है हमारे लिए, एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, दूसरा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, थोड़ा आगे आइए तो ग्रेट अक्टूबर रिवॉल्यूशन। बाद में तो हम सब चीज को रिवॉल्यूशन ही कहने लगे हैं। अब संचार क्रांति हो गया, इंफॉर्मेशन क्रांति हो गई, सब तरह से क्रांति ही हो रही है और लोग क्रांति में बचते जा रहे हैं। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो 3 बातें निकल के आई थी, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों बातें आज दुनिया का कोई देश पब्लिक डोमेन में ना कहने को तैयार नहीं है। इंडिविजुअल तो है जो करें अपने लेवल पर जो बात करें कि ये तीनों जो मूल तत्व हैं दुनिया ने इसे ग्राह्य कर लिया।
और दुनिया का कोई देश अब इसको नकारता नहीं है कि समानता चाहिए। लेकिन एक दूसरा भी गवाही हमारे पास है, विटनेस है कि हम कई विश्व युद्ध भी लड़े। भारत में इतनी अच्छी बातें थी, फिर भी महाभारत अगर आप काव्य को कहीं, साहित्य को कहीं सोशल रियलिटी से जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपने महाभारत में किया, जातियों में भी बटे, और आज वैमनस्य के रूप में जाति धर्म सब कुछ हमारे बीच है। ये सारे बोध के बाद दुनिया ने भी लड़ाइयां लड़ी रिसोर्स कंट्रोल के लिए, फर्स्ट वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और तब भी उन्होंने कार्टेल बनाया। इकोनॉमिक्स वाले इस बात को बेहतर समझते होंगे। कार्टेल बनाया, उस कार्टेल में ये तय हो गया कि जो मेजर लीडरशिप कुछ लोगों के हाथ में होगी, जिसके पास वीटो होगा, और वो दुनिया को एडवाइजरी देंगे, गाइड करेंगे, और तब दुनिया चलेगी। उसकी बेसिस पर वर्ल्ड गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट, लेकिन एक बात और भी साथ में आई, जब आप ये सब कहते रहे और डेवलपमेंट के प्रोसेस में आप आए पोस्ट वर्ल्ड वॉर, तब जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया आपने अपनाई, उस डेवलपमेंट प्रक्रिया में कोई समानता की ऐसी बात नहीं है। कहीं अफ्रीका भी था और कहीं न्यूयॉर्क भी बना। भारत में कालाहांडी भी है और पटना भी है, मुंबई भी है, सूरत भी है। आगे हम बात करेंगे आपसे इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी की, तो बात करेंगे। हमने उसके प्रतिरोध भी देखे, सिपाही विद्रोह से लेके चंपारण सत्याग्रह कहिए, तेभागा कहिए, बारडोली खेड़ा के आंदोलन कहिए, फ्रीडम स्ट्रगल के जो इंसाइट्स हैं, इनसे लड़के और जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के जो वैल्यू थे, उस वैल्यू को अंगीकृत करने के लिए वो भी हमने देखा। फ्रीडम स्ट्रगल में 3-4 बातें बहुत तेज से निकल के आई थी। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, जोतने वाले को जमीन, और एक उन्नतशील जिंदगी। ये हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा बन रहा था। फ्रीडम मूवमेंट अंग्रेज के शासन के खिलाफ। हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिबेट, हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के हमको बेहतर बता पाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट में इन सारी बातों को बेहतर से रखा गया। दुनिया के देश भी लड़ रहे थे अपने को लिबरेट करने के, और वो भी लिबरेट हुए। और उस लिबरेशन के क्रम में नेक्स्ट, उस लिबरेशन के क्रम में कई देश आजाद हुए, भारत भी आजाद हुआ। नेक्स्ट, लेकिन उस क्रम में जो चीजें निकल के आ रही थी, तो याद करना चाहिए, दादा भाई नौरोजी ने जब ब्रेन थ्योरी दिया था, तो किस तरह से कॉलोनी बना के हमारा शोषण हुआ और हमारी संपत्ति चली गई। कभी सोने की चिड़िया कहने वाला देश कहाँ चला गया, इसका एक विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन उस समय नेशनल प्लानिंग कमीशन जो बनी थी 1938 में, उसने उस समय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि कम से कम कितना चाहिए मनुष्य को जीने के लिए। नेक्स्ट, थोड़ी बात जब हम सुपर स्ट्रक्चर गवर्नेंस की कर रहे होते हैं, तो मैं थोड़ी बात आपको 1931 के सेंसस का भी कर दूं, क्योंकि उसके बाद तो उस तरह का सेंसस हुआ नहीं। लेकिन जो सेंसस में एक बात तय थी कि अंग्रेजी जानने वाले लोग कहाँ किस तरह के थे, उसकी एक चर्चा है उस सेंसस। सबसे अधिक अंग्रेजी जानने वाले लोग वो थे जो अंग्रेज और जमींदार के बीच में कड़ी का काम करते थे। हम लोग उसको मुंशी कहें आज के तारीख में, लेकिन वो लोग थे जो इन दोनों के बीच में लाइटनिंग का काम करते। आप देखेंगे कि अधिकांश जो आईसीएस और आईएएस ऑफिसर हुए, वो उस समय यही कड़ी वाले लोग। तो पॉलिटी को कंट्रोल करने ब्यूरोक्रेसी में कौन पहुंचा? जो अंग्रेज और हिंदुस्तानी के बीच में जो लाइटनिंग का काम करता था, वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने। दूसरा 1935 का एक्ट कहता है कि इस समय वोट देने का अधिकार किसको मिला? जो रेवेन्यू टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स देता है, तो कौन थे? जमींदार। तो पॉलिटिक्स में शामिल कौन हुआ? या तो ब्यूरोक्रेसी शामिल हुई या जमीन वाला शामिल हुआ। जो अंतिम आदमी का बोल हमारे पास था, सदैव हम सुखना का बोल था, वो शामिल कहाँ हुआ पॉलिटिक्स बनाने में? रिकंस्ट्रक्शन हुआ था। नेक्स्ट, फ्रीडम मूवमेंट और स्ट्रगल के दौर से जो चीजें निकल के आई, उसमें 3 बातें
3 धारा बन के आई। पहली धारा थी सेल्फ रिलायंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि हम सेल्फ रिलायंस होंगे, थ्रू इंडस्ट्री होंगे। उसमें भी डिबेट है, गांधी नेहरू का अलग। गांधी छोटी मशीन की बात करते थे जो थकान दूर करे, नेहरू बड़ी मशीन की बात करते थे जिसे गांव से लोग उठा के शहर ले जाएंगे, गांव पर भार काम हो जाएगा, गांव समुन्नत हो जाएगा। गांधी ने कहा कि आपको शायद पता नहीं कि शहर गांव को नहीं रख सकता है, इतनी ताकत शहर में नहीं है। ये बहस तो चलता ही रहा। कल मैं इस पर थोड़ी बात कही थी तो हमारे पत्रकार बंधु ने कह दिया कि हमने कहा है कि मशीन नहीं चाहिए, हमें चरखा चाहिए। बहस ही नहीं समझ पाए, ये हमारी त्रासदी है। जब इस बहस को कह रहे थे तो आज अखबार में मैंने देखा लिखा हुआ है कि मैंने कहा है कि हमें मशीन नहीं चाहिए, चरखा चाहिए, और उसको अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया लोगों ने। तो वो भी हमारी त्रासदी है। कम्युनिकेशन स्किल हमारा उतना बढ़िया नहीं है, क्योंकि गांधी ने तो कम्युनिकेशन स्किल पर इतना जोर दिया था कि नमक को बनाया सत्याग्रह का आधार। और मोतीलाल नेहरू ने जब कहा क्या करने से क्या होने वाला है, ताकि आप वहीं पर बना के देख लीजिए, और जब सिर्फ गर्म पानी करने के लिए वहां रख दिए तो अरेस्ट कर दिए गए। और गांधी को जब सरोजिनी नायडू ने पूछा कि ये तो हमारे हाथ में झंडा दे रहे हैं, तब कहाँ लेके जाएंगे, कितनी देर थामेंगे, ताकि तब तक थामोगे जब तक तुम्हारी कलाई तोड़ न दी जाए। वुमेन लीडरशिप का भागीदारी के बगैर समाज निर्माण की प्रक्रिया बन सकती है, चाहे वो लड़ाई हो या निर्माण हो, असंभव है। तो जिस संपोषी विकास की बात आप करना चाहते हैं वो वहां पर में वुमेन पैरिटी के बिना नहीं चलता। हमारा परिवार तो पहले से कहा गया कि 2 पहिया है, समाज के साथ चलता है। इस सेल्फ रिलायंस के साथ हमारी धारणा थी, पीपुल्स प्लान बनाया, गांधीयन प्लान बना, बॉम्बे प्लान बना, 3 बना। पीपुल्स प्लान ने ट्रेड यूनियन की तरफ से, गांधीयन प्लान श्रीमन नारायण जी, और बॉम्बे प्लान इंडस्ट्रियल जी। लेकिन फाइनली प्रिवेल क्या किया, इंडस्ट्रियल प्लान। और बावजूद इसके कंस्टिट्यूएंट असेंबली में हमने एक अपना एजेंडा सेट किया, वो था प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसको दोहराता है कि हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। आप सभी जानते हैं, नेक्स्ट, हम सभी जानते हैं, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, नेक्स्ट, क्योंकि यही हमारा रेफरेंस पॉइंट प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, हम कैसा भारत चाहते हैं। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, गैर बराबरी नहीं होगी, सबको समानता का अधिकार होगा, सभी उसमें चलेंगे, और एक ऐसा भारत बनाएंगे जिसमें हर कोई खुशहाल रहेगा। और इसके लिए हमने कोशिश भी की। कोशिश क्या की, प्लान एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का। अब ये यहाँ से खिचड़ी शुरू हो, हमारा अपना प्लान नहीं है। हमने सोवियत का प्लानिंग ले लिया, अमेरिका का कम्युनिटी डेवलपमेंट ले लिया, दोनों का मिक्स करके चलाया। हमने प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ले लिया, दोनों का मिक्स चलाया। मैंने खिचड़ी बनाने में हम लोग ताज। और उसके कारण से परिणाम क्या हुआ कि जो हम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करने जा रहे थे और जो पॉलिसी हमने बनाई थी, वो दोनों मिलकर उस एजेंडा को चलने नहीं दिया। हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हुआ नहीं, लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुआ, जमींदारी उन्मूलन होके नहीं हुआ, आज भी लटका हुआ है। बिहार तो ऐसी जगह है जहां पर मैं भूदान, ग्रामदान, जिलादान, राजदान तक हो गया, और यहीं पर विनोबा को नरकटियागंज में कहना पड़ गया कि मैं नरकटियागंज से कहता हूं, संपत्ति विसर्जन नहीं करोगे तो नरकटिया होगी। हमने नहीं माना विनोबा की बात, और पूरा मध्य बिहार जला, पूरा बंगाल जला। जब संतों की बात समाज के निर्माण की प्रक्रिया में, वैज्ञानिक बात अगर आप मनसुना कर देते हैं तो हमें भोगना होता है, सोशल साइड भोगना। खैर वो हुआ। हाइपोथेसिस क्या बनी कि हम अगर केक बड़ा कर लेंगे, ग्रोथ सेंट्रिक, हम बात कर रहे थे कि हमारा बुनियाद ही ग्रोथ सेंट्रिक रहा है, हम एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक नहीं है, तो बुनियाद खड़ा है कि हम ग्रोथ सेंट्रिक होंगे, केक बड़ा कर लेंगे तो सबको हिस्सा मिल जाएगा अपने आप। लेकिन वो नीचे पहुंचा नहीं, एक जगह जमा होता गया, दूसरी जगह खाली रहता गया, एक बहुत बड़ा गैप तैयार हो गया। बाद में हमने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होगा, टारगेट करो, गरीब पर सीधे टारगेट करो। अमर सिंह ने कहा कि टारगेट मार्जिनल पॉवर्टी की बात करिए, जल्दी में टारगेट दिखेगा, वो भी हो गया। फिर कुछ नहीं हुआ कि नहीं बेसिक नीड्स अप्रोच की बात करिए, तो बेसिक नीड्स अप्रोच की बात हुई, उससे भी नहीं हुआ कि बहुत हो गया, अब अपने से नहीं हो सकता, बाजार को कैसे करने हैं, बाजार। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन तीनों की बात करेगा कि स्टेट के जिम्मे नहीं रखी, आप दे दीजिए लोगों को करने।
और एक तरफ आपने बाजार को दे दिया और दूसरी तरफ आपने कहा कि नहीं पार्टिसिपेटरी भी होगा, इंक्लूसिव भी होगा। अरे बाजार इंक्लूसिव थोड़े करता है, बाजार तो जेब में पैसे वाले को पहचानता है, बाकी को नहीं पहचानता। जिसके जेब में पैसा है वो बाजार में खरीद सकता है, जिसके जेब में पैसा है वो बाजार में नहीं खरीद सकता। और जेब में पैसा होने के लिए रोजगार चाहिए। और आपने तो ग्रोथ सर्किट इकोनॉमी शुरू की थी, आपने तो एम्प्लॉयमेंट सर्किट की ही नहीं। 2 रुपये पेड़ बबूल का आम कहाते हो। आगे चल के जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म से सारे वादे फेल होने लगे तो हमने मजबूत निर्णय की बात की कि लोकतंत्र में मजबूत निर्णय से देश बदलेगा। और तब मजबूत निर्णय हमने की नोटबंदी। परिणाम हुआ, हमने देखा हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन के बाद अगर ये फेल हो गया तो जिस चौराहे पर हमको रोकेगी। हिंदुस्तान का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और अपने नेता पर बहुत भरोसा करता है। एक दौर था कि लाल बहादुर शास्त्री के कहने पर लोग सप्ताह का एक दिन भूखे रहते, पूरे देश को खिला दिया आत्मनिर्भर बनाने। तो उसने सोचा कि ये दूसरा कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो समाज को बदल देगा। अगर ये हार्ड फैसला ले रहा है शायद हमारे लिए होगा, मान लो इसकी बात। नोटबंदी हो गई। परिणाम क्या निकला? लोग सड़क पर जब लाइन कतार में खड़े थे, अपना पेंशन और टैक्स पेमेंट नहीं ले पा रहे थे, तो कहा कि ये क्रांति है, लड़ाई की है, आप शहीद हो रहे हैं इसमें। तो शहीद का दर्जा भी नहीं मिला। हमारा एक तो इकोनॉमिक रिफॉर्म के कारण से ही हमारी नौकरी जा रही थी, हमारे काम छिन रहे थे। नोटबंदी ने उस पर एक और हथौड़ा मारा। जॉन ग्रेज ने लिखा कि ग्रोथ का जो पहिया चल रहा था नेशनल हाईवे पर, उसको हमने पिन मार दी और वो गाड़ी लुढ़क के किनारे चली गई, सीरियल हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक तो नहीं ही रहा, ग्रोथ भी गिरे। और उसके बाद तब हमने कहा कि जीएसटी, नई आर्थिक आजादी, बड़े 12 बजे रात में एहतसाब किया। लेकिन वो क्या थी, जब हमारी इकोनॉमी ही स्कैटर्ड हो गई तो आप जीएसटी लगा ही लीजिए, टैक्स का। दूसरा कि हम चार्टर अकाउंटेंट कहां से लाए हैं? अभी हमारे पास तो है नहीं। हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर की इकोनॉमी जो 45% से 50% कंट्रीब्यूट करता है, वो तो ऑलमोस्ट इलिटरेट लोग हैं। उनसे आप ऑनलाइन रिटर्न भरवाएंगे, वो रिटर्न भरेगा या बिजनेस करेगा? वेबसाइट ठप हो गया, डिजिटल इकोनॉमी सैटर्ड हो गया। कुछ दिन के लिए बड़ा आता था पेटीएम चाय की दुकान पर, फिर लौट के हम लोग आ गए कैश इकोनॉमी पर। और अब आरबीआई का रिपोर्ट आ गया है कि पहले से ज्यादा करेंसी हमारे, और 2000 रुपये फिर गायब हो गया बाजार से, वो कहीं पर है। उसके बाद जो बचा खुचा था, दुनिया में ताकत थी, कराह हो रहा था, कोरोना ने हमारे ऊपर भी आफत डाली। लेकिन जब शुरू में कहा गया कि कोरोना ने आफत डाली तो हम हवाई जहाज अगर बंद कर दिए होते तो हमारे यहाँ आता ही नहीं थे। तो हम तो उसको बंद नहीं किए, लॉकडाउन कर दिए। और जो जहां था हम भूल गए समझना कि वहां से जब वो घर लौटेगा और नहीं लौटेगा तो वैसे स्थिति में बिजली का बिल कहां से देगा, बच्चों को कहां से पढ़ाएगा, राशन कहां से लाएगा, पानी कहां से पिएगा, किराया कहां से देगा, ये भी हम भूल गए। और लोग सड़क पर निकलना शुरू किए, आप सभी जानते हैं, उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। ये जो मेजर पॉलिसीज आई वो हमारे जो इकोनॉमी को और भी इनइक्वालिटी का शिकार बनाया। उस बीच में जब हमारी इकोनॉमी लॉकडाउन में तबाह थी तो कुछ लोगों की संपत्ति बढ़ रही थी 300 गुना, बढ़ रहा था, खूब तेजी से बढ़ रहा था। किस चीज के लिए? जो उसमें ऑनलाइन चल रहा था, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो या एजुकेशन के क्षेत्र में हो या अन्य क्षेत्र में हो, ये चल रहा था। नेक्स्ट, अब ये सब कुछ चल ही रहा है। इसी बीच में दुनिया में जो कुछ हो रहा था ब्रिटेन वुड्स के बाद या फिर आगे चलिए WTO के बाद, कि दुनिया में जो क्राइसिस है डेवलप्ड नेशंस में, इस क्राइसिस को डेवलपिंग नेशन पर कैसे ट्रांसफर किया। और वो जो डेवलपिंग नेशंस पर ट्रांसफर होना शुरू हुआ और उसके बीच में राइडर लगाना शुरू किया कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। वर्ल्ड बैंक के डिक्टेट आने शुरू हुए। एक तरफ वो चला, दूसरी तरफ यूएन का चार्टर बनना शुरू हुआ।
यूएन का मिलेनियम डेवलपमेंट गोल भी तैयार हुआ कि मिनिमम इतना हमको चाहिए, 2015 तक हम गरीबी को आधा कर लेंगे, नहीं हुआ। फिर आया 2012 में, लोग बैठे थे कि ये तो नहीं हो पा रहा है, हमको थोड़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात कर दिया कि 2030 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसके लिए यूनिवर्सली उन्होंने 17 एजेंडा बनाए। मैं उन एजेंडा को आपके बीच नहीं रखना चाहता हूं। नेक्स्ट, लेकिन कुछ एजेंडा आपके सामने रखना चाहता हूं। नो पॉवर्टी, नो हंगर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जेंडर क्वालिटी, नेक्स्ट, रिड्यूस इनइक्वालिटी, और लास्ट में पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। ये जो कुछ एजेंडा थे, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 16, इस एजेंडा को ध्यान में रख के इंडियन कंडीशन को समझने की कोशिश करिए, तो हमें समझ में आएगा जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो हमारे एक्सपीरियंस थे, जो एजेंडा था और बाद में जो एजेंडा आया, इन दोनों को समाहित कर देने के बाद अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना है तो हमने क्या बदला। नेक्स्ट, हम प्रगति किए हैं, ऐसा नहीं है। हमारे ग्रॉस नेशनल इनकम 32 गुना बढ़ा है, नेट नेशनल इनकम 30-31 गुना बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम हमारा 8.4, ग्रोथ रेट जो हमारा नेशनल इनकम का है वो भी बुरा नहीं, 5.2% ऑन एन एवरेज लॉन्ग टर्म। क्रिटिकल में फिर विश्लेषण अलग से पॉलिसी का कर सकते। नेट नेशनल इनकम भी 5% से आगे, लेकिन अगर आप इसके ट्रेंड को देखना चाहेंगे तो निराशा होगी। नेक्स्ट, ये है हमारा ट्रेंड। अब आप देखिए कि देखने में तो बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन ये कैसे है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ग्रोथ का बेस इतना थोड़ा सा है, जरा सा होता है तो उछाल दिखता है, और जरा सा गिरता है तो गड्ढा में दिखता है। और यही कारण था कि लॉकडाउन में हमारा ग्रोथ रेट घट के 24% माइनस हो गया। अगर आप नेचर ऑफ ग्रोथ को समझ रहे हैं तो क्या ये डिलीवर करने वाला है? ये कहां जा रहा है? कौन देगा इसका हिसाब? नेक्स्ट, नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की दूरी बढ़ती चली गई। आप देखिए, शुरू में जो था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद लगातार ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की दूरी बढ़ती गई, तो हम जॉबलेस ग्रोथ के साथ चल रहे हैं। कहां हम एम्प्लॉयमेंट संख्या की बात करना चाहते थे, परचेजिंग पावर की बात करना चाहते थे, हम कहां पहुंच गए? नेक्स्ट, अगर इसको इनइक्वालिटी के सेंस में देखेंगे तो हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, लेकिन उस पर कैपिटा इनकम को भी अगर आप देखें, हम स्टेट वाइज अगर देखने की कोशिश करते हैं और तब उसका अगर हम गिनी रेशियो हर स्टेट का निकाल के देखते हैं तो देखिए गिनी रेशियो बढ़ा है ऊपर की तरफ। क्या मतलब? कि इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ रही। थोड़ा सा आपको हम कॉन्टेक्चुअलाइज कर दें, गया में बैठे हुए तो ये अनजस्टिफाइड होगा कि गया की चर्चा न करें। हिंदुस्तान में जितने जिले हैं, अगर उनका पर कैपिटा इनकम देखने की कोशिश करें तो बिहार का पर कैपिटा इनकम अगर 33,979 रुपए लेटेस्ट देता है, तो हिंदुस्तान में 86,000, और हरियाणा में 163,900, और तमिलनाडु में 1.5 लाख, ये पर कैपिटा है। लेकिन गया कहाँ है? गया है 31,912, और ये गया नहीं, बिहार के 38 जिला में पटना का पर कैपिटा इनकम 1,31,000, और 3 से 4 जिले हैं तो 40,000 से 50,000 के बीच में, और बाकी सब 30,000 के नीचे। शिवहर का जो पर कैपिटा इनकम है वो 19,000, तो 1,31,000 पटना का और शिवहर का 19,000। उसी तरह से अन्य जिलों का भी अगर आप वर्गीकरण देखेंगे तो ये जो इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी है लो इनकम की, एक तो कहते हैं निराशा कि बिहार पीछे क्यों है। अगर देश का इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी को आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं और बिहार जैसे गरीब राज्यों को अगर आप नहीं देख रहे हैं, तो बिहार के अंदर भी जो जिले हैं उनके भी इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटी और बढ़ेगी, और हम सूखा, बाढ़ और दोनों के मार से त्रस्त भी रहते हैं।
तो इन कारणों से हमारा ये रीजनल डिस्पैरिटी और जो इनइक्वालिटी का इशू है और भी शार्प हो रहा है। नेक्स्ट, मैं समझ गया, आप आगे बहुत जल्दी हमको समझना होगा। अब जल्दी जल्दी हम चलेंगे, इन चीजों पर बहुत ही ध्यान देना चाहते हैं। देखिए, ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टीमेट हमें बताता है, नेक्स्ट, हाँ, ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टीमेट बताता है तो दिखाता है कि वो घट रहा है, पहले से कम हुआ है। ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं नीचे आया है। थोड़ा आगे बढ़ जाइए, इंटर स्टेट डिस्पैरिटी को छोड़ दीजिए, नीचे चलिए, हम मल्टी डायमेंशनल करते जाएंगे। हाँ, और आगे बढ़िए। हाँ, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है। नीति आयोग ने 1915-16 का डेटा लेकर के बनाया है। ये 12 इंडिकेटर पर है, 2-3 इंडिकेटर एजुकेशन के, 2-3 हेल्थ के और बाकी लिविंग कंडीशन के इंडिकेटर्स हैं। तो ये एक व्यापक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नेशनल लेवल पर यूपीएस ने बनाया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएन के साथ मिलकर, उसी का कॉपी हम यहाँ पर भारत में किया, कोशिश की कि ये कहाँ है। तो देखते हैं बिहार सबसे ऊपर, कहीं तो ऊपर है। नेक्स्ट, अब आप देखिए उसके नेचर में, अगर सोशल कैटेगरी में देखिए ये गरीबी कहां पर है, ये शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, उसके बाद जनरल कैटेगरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट, हाँ, ये है अब बिहार का डिफरेंट जिलों का देखिए, ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जिलेवार। इस भयावह स्थिति में है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं। नेक्स्ट, क्यों है ऐसा? जब हमने इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहा, हम फेल किए, हमने जमीन बांटी नहीं बांटी, इसका परिणाम क्या हुआ? लैंड इनइक्वालिटी बरकरार है। इस लैंड इनइक्वालिटी को अगर हम समझने की कोशिश नहीं किए तो विनोबा का वो भी हमें याद नहीं रहा, संपत्ति विसर्जन की भी बात हमें याद नहीं रही, गांधी का ट्रस्टीशिप तो बहुत ऊंची चेतना की बात है, वो नहीं हो सकती, कोई इनइक्वालिटी बनी रही आज भी। नेक्स्ट, इसके कारण से कंजम्पशन इनइक्वालिटी का भी सवाल वही खड़ा रहा। बीच में हमने जो राइट टू फूड के तहत और बाकी ढंग से जो हमने कुछ रिड्रेसल मैकेनिज्म अपनाए, तो उसके कारण से पूरा हम हंगर में कम हुए, लेकिन माल न्यूट्रिशन कम हमारा नहीं हुआ। हम आगे बात करेंगे इस पर। नेक्स्ट, हमारा न्यूट्रिशन की हालत क्या है देख लीजिए, कहा ये डिप्राइव्ड कैटेगरी के लोग हैं जो कितने बड़े तादाद में है, क्योंकि उनके पास अगर गरीबी है और आमदनी नहीं है तो न्यूट्रिशन के अभाव तो होंगे ही। नेक्स्ट, अब हम कह रहे हैं कि 22 तक तो सबको घर दे देना था, 2022 तक, ये लोग हैं जिनके पास घर नहीं। नेक्स्ट, एक काम हमारी अच्छी हुई है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा बढ़ा है, वो इनइक्वालिटी घटी, उम्र हमारा बढ़ा है, तो उसमें जो इनइक्वालिटी वो थोड़ा घटा है। अब इस पर विश्लेषण क्या हो सकता है कि वो जो घटा हुआ या बढ़ा हुआ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके बीच सूखे हड्डी वाले कितने हैं, कुपोषित कितने हैं, जो आपने ऊपर देखा है। फिर आगे बढ़िए। नेक्स्ट, ये है एनीमिकल सिचुएशन। अगर आप देखते हैं तो चाइल्ड न्यूट्रिशन का, एनीमिया का शिकार लोग कितने हैं, उसकी परिस्थितियां कितना भयावह है, लाल अंक में देखिए नया वाला है। नेक्स्ट, दूसरा है बच्चों का स्टंट, छिगनापन, बौनापन, न्यूट्रिशन नहीं है तो बौनापन होगा। नेक्स्ट, वेस्टेज, खड़ा है सूखी लकड़ी की तरह, उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, ये हमारा भयावह तस्वीर है। नेक्स्ट, महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, वो भी उसी हालत है। नेक्स्ट, अब हम इस पर विस्तार में जाएंगे। 2011 के बाद का आंकड़ा नहीं है और पहली बार भारत यह महसूस कर रहा है कि हम सेंसस नहीं करा पाए। बहुत मजबूत गृह नीति हमारे पास है, हम सेंसस नहीं करा पाए। कलेक्शन करा लेते हैं, मीटिंग करा लेते हैं, रैली करा लेते हैं, सेंसस नहीं करा पाए, क्योंकि सेंसस में जो स्पष्ट आंकड़े आएंगे वो हमें आईना भी दिखाता है कि हम कहाँ पहुंचे, कहाँ नहीं, वो हम नहीं करा पाए, इसलिए हम उसके बाद की हुआ नहीं बता पा रहे हैं। सेंट्रल पर कुछ डेटा आगे बताएंगे। आइए नेक्स्ट,
अब यहाँ पर मैं लिटरेसी के सवाल को पूरा कहते हैं कि वुमेन लिटरेसी का +10 वाला देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। ये है 2015-16 और 2019-21 के बीच के आंकड़े। ये NFHS 5 का डेटा है। महिला 10 पास आज भी कहाँ खड़ी है वो देखिए। हम नार्या जत्र पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता की बात कहने वाले लोग आज भी महिला को 10वीं पास नहीं करने देते, वो स्थिति हम नहीं बता पाए। नेक्स्ट, उनके डिटेल्स है कि कहाँ उसके परसेंटेज है, मैं थोड़ी विस्तार में नहीं जा रहा हूँ कि ये कितने कम तादाद में महिलाएं हैं विभिन्न हायर एजुकेशन में। हम बराबरी की बात करते हैं। नेक्स्ट, और अब ये 2-3-4 स्लाइड छोड़ के ड्राइंग इनइक्वालिटी पर आ जाए। चलिए आगे बढ़िए, ये उसी का फर्दर एलाबोरेशन था। हाँ, अभी के जो आंकड़े आए हैं बताते हैं कि हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा ही, कल से इस पर चर्चा कर रहे हैं, इनइक्वालिटी भी बढ़ी। हमारा रूरल कंजम्पशन 4 दशक नीचे चला गया। लोग जो लौट के आए और रोजगार का अभाव है, ऐसे में लोग जिए भी कहाँ, कहाँ रोजगार है। अभी तो NSS का आंकड़ा आया कि 31% नौजवान खाली हाथ बैठा हुआ है। नेक्स्ट, अब ये चूंकि कल बात हो चुकी है, PKT का जो ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट था, इस पर में कल चर्चा हो चुकी है, हम दोहराएंगे नहीं। हमारी इनइक्वालिटी का क्या स्वरूप है इंडिया का, वो देख लीजिए। जो सिर्फ बताता ये है कि टॉप 10% लोगों के पास में 52% और टॉप बॉटम 50% के पास में 13% आमदनी है। नेक्स्ट, इंटर नेशनल कंपेरिजन थोड़ा कर लें तो इनइक्वालिटी इंडिया का सबसे ज्यादा बढ़ा है 2005 के बाद से, बढ़ता गया शुरू से 1995 से ही, और लेकिन अब वो सबसे ज्यादा है अनइक्वालिटी, ये दिखता है। नेक्स्ट, ये सिर्फ भारत का है, दुनिया का जो है उसका देखिए कि 8.5% बॉटम 50% लोगों के पास में आमदनी दुनिया में, और 10% लोगों के पास 52% है। उसके साथ अगर आप वेल्थ को जोड़े तो और खड़ा, आमदनी से बात वेल्थ में आइए, 50% लोगों के पास मात्र 2% संपत्ति है, और 10% लोगों के पास 76% संपत्ति। ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट की बात है। चलिए आगे आइए, अब थोड़ा इसको समाप्त करते हैं। ये बात सही है कि बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए, पॉवर्टी घटी भी है, थोड़ा सरकारी आंकड़ों से इनइक्वालिटी घटी भी है, लेकिन जब उसके आउटकम का चर्चा करते हैं, उसके डिटेल्स में जाते हैं, तो खुद सरकारी रिपोर्ट भी नीति आयोग का कहता है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी बढ़ी है, हमारा कुपोषण ज्यादा है, और इस तरफ कहता है कि इनइक्वालिटी घटी भी है। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जिसके कारण से वो डेटा देना छोड़ दिए हैं, डेटा नहीं देते, क्योंकि अब फन डोमेन में डिस्कशन नहीं होना चाहिए। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जो ये नॉलेज जनरेशन का सेंटर था, वहां चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए इस चीज को अब बाधित हो रहा है। हालांकि ऑनलाइन चीजें बहुत चीज मिल रही है, पैसा दीजिए सब कुछ मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम यह भी कहेंगे कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो दावा किया था कि हम इनइक्वालिटी को घटाएंगे, ये दावा खोखला साबित हुआ, इनइक्वालिटी बढ़ी। नेक्स्ट, लेकिन इसको सस्टेनेबल बनाने के लिए अगर बात करनी है, अगर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को एड्रेस नहीं करेंगे तो क्या ये ग्रोथ सस्टेनेबल होगा? मैं कहता हूं नहीं। तो अगर आप जो इकोनॉमी ऑफ परमानेंस या नेचर क्रिएचर और टेक्नोलॉजी का जो सिम्बियोटिक रिलेशन है, उतनी बड़ी बात आप ना भी करें, अगर सिर्फ जो चल रहा है उसको भी थामे, तो इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को एड्रेस करना। और उसके लिए अमर सेन की जो किताब थी इंटाइटलमेंट वाली, उस पर मैं ब्रह्मानंद ने कमेंट किया, और तब उस कमेंट में उन्होंने कहा कि इसका आंसर जो है वो, उसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है वो पॉलिटिकल इकोनॉमी में है। सिर्फ फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के काफी नहीं चला सकते, गवर्नेंस को भी देखना, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को भी देखना होगा,
कौन किसके लिए काम कर रहा है, उसके पूरे स्थिति को, उसके स्टेट का और पब्लिक इंटरेस्ट का सिमुलेशन कहाँ बनता है वो भी देखना। और ये जो है ये चीजें जब पीकेटी प्रेस्क्राइब करते हैं कि वेल्थ टैक्स लगाइए, जो लोगों ने जमा किया है वो लेकर के लोगों के बीच में उसको रिडिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि अगर आप धन नहीं बांट पाए और संपत्ति, अब इसको बांटने का तरीका कहाँ ढूंढेंगे? हमारे यहाँ तो वेल्थ टैक्स माफ कर दिया गया, अब तो वेल्थ टैक्स लगता नहीं, खत्म हो। नेक्स्ट, लेकिन निराकरण इसी में है कि प्रो पुअर आइडियोलॉजी और पॉलिटिक्स की आवश्यकता है, बिना इसके नहीं होगा। अगर आप वो करना चाहते हैं तो जिस तरह से चल रहा है ये दुनिया बढ़ाएगी ही, घटाएगी नहीं। और ऐसे समय में हमको जो चेतावनी मिली है विद्वानों के, सोशल प्रैक्टिशनर के, उनको ध्यान में रखना होगा। अगर दुनिया की चेतावनी देखना चाहें तो मार्क्स को याद करिए, टॉल्स्टॉय को याद करिए, रस्किन को याद करिए। अगर भारत में आना चाहते हैं तो भगत सिंह को याद करिए, गांधी को याद करिए, अम्बेडकर को याद करिए, विनोबा को याद करिए, लोहिया को याद करिए, जेपी को याद करिए। मैं इसलिए जोर देता हूं कि गांधी, लोहिया, जेपी को याद करिए कि अभी देश में सरकार नहीं लोगों की है। जो लोग इस आंदोलन से निकल के आए थे, जेपी आंदोलन, यही लोग सत्ता में सब तरफ है। अब वो कितने जेपी के हैं ये निर्णय करिए आप। लेकिन मैं यह भी नहीं कहना चाहता हूं कि यह असंभव है। डुएबल जस्टिस की बात अमर सिंह क्या करते थे, आइडिया ऑफ जस्टिस। अगर उतना भी करना हो, बिहार में बनी और बाकी भूदान का जमीन जो बांट दिए हैं ऑलरेडी, कम से कम उसका अधिकार तो दिला दीजिए गरीबों का, तो वो भी नहीं हुआ। बंदोपाध्याय को यूपीडब्ल्यू में लेख लिखना पड़ा, दिस इज ओनली द गट्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार दैट दे कैन डिनाई दिस। मैं कहना ये नहीं चाहता हूं कि आप लौट के पीछे गांधी के 1937 में जाइए एजुकेशन का तालीम कॉन्फ्रेंस को याद करने के लिए। मैं ये भी नहीं कहता कि 1948 वाली सिचुएशन आज है। मैं ये भी नहीं कहता कि आज के दुनिया में जो प्रगति है उसको आप शामिल ना करें, लेकिन एलिमेंट के कंटेंट में वो मसला चाहिए जो हाथ को बेकार न करे, हाथ को क्षमता दे। अगर टाइपराइटर में थकान होती है तो कंप्यूटर बहुत अच्छा है, मिलनी चाहिए, इंटरनेट की सुविधा लीजिए। लेकिन आपने देखा उसमें जब हम महिलाओं के +10 की बात की थी तो उसी में था कि इंटरनेट फर्स्ट यूजर, एवर यूज इंटरनेट का जो परसेंटेज था वो 19 से 20% है पूरे देश में। महिलाओं की और भी कम है। Therefore, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज के तारीख में उसको अपडेट करने की जरूरत है, और उस अपडेटिंग के लिए करंट कॉन्टेक्स्ट को याद जरूर रखिए, लेकिन उस बोध को संभालने की कोशिश करिए, उस चेतावनी को समझिए कि अगर आप वो नहीं करेंगे तो जब कहा कि नरकटिया में नरकटिया होगा तो हुआ। आज अगर इस भूख को आप नहीं संभालेंगे, कहने के लिए कहते हैं कि हम लोगों को फ्री में देते हैं, ये अनाज किसान उगाता है, उसको आप फ्री में बांटते हैं, लेकिन किसान को उसका दाम नहीं देते। मैंने कल भी बात की थी, आज फिर वहीं से खत्म करूंगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर करना होगा तो हाथ को काम देना होगा, बिना उसके नहीं होगा। प्रकृति से समवाय बनाना होगा, इसके लिए अपडेट करना होगा, अपने स्ट्रेटजी, प्रोग्राम एंड पॉलिसीज को अपडेट करना होगा 21st सेंचुरी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप मॉडर्न हो जाइए। हम तो चाहते हैं कि हर आदमी हवाई जहाज चले, लेकिन स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज जो है इंडिया में, दुनिया के देशों में अगर स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेज था उसको उन्होंने बदला, बावजूद इसके उनको रिजर्वेशन नहीं मिला। भारत में जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है उसको तो अभी आप उसको भी दूर नहीं किए हैं। कल चर्चा हो रही थी लेविसियन फ्रेमवर्क की, तो लेविसियन फ्रेमवर्क भी यहाँ नहीं शामिल हो पाया, तो इसलिए वो भी नहीं हो पाया है। ऐसे परिस्थिति में एक सिम्बियोटिक रिलेशन वर्कआउट करने की आवश्यकता है। वो तो कौन करेगा? जनता की सरकार। जनता की सरकार होगी तो करेगा। मैं कोट एंड कोट जनता की सरकार कर रहा हूं, जो जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता लिए काम करेगा, वो होगा जनता की सरकार। ये नहीं कि वोट हमारा और काम किसी का। संसद को जनता के अख्तियार में मानिए। इस पॉलिटिकल इकोनॉमी को ध्यान में रखे अगर हम पॉलिसी बनाते हैं। थैंक्स।
नेक्स्ट। तो शायद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पर चल पाएंगे, और जो तात्विक रूप से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है नेचर बेस्ड एंड टेक्नोलॉजी संगठन का, वो तो बहुत दूर की चीज है, वो अभी संभव नहीं है। इस परिस्थिति में आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, सीखना चाहते हैं, सीखेंगे। दो परिस्थितियों में सीखता है। एक परिस्थिति होती है कि बच्चों को हम कहते हैं कि आग मत छुओ, पक जाओ, अगर मानता है तो नहीं पकता है, और अगर नहीं मानता है तो पकता है तब छोड़ता है, तब फिर नहीं छूता है। तो आपके हाथ में है, या पक के सीखें, या जो हमारे पास ज्ञान का भंडार है उससे सीख के अपने को अपडेट करें। आपने धैर्यपूर्वक हमें सुना, और इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हमें आपने बोलने का मौका दिया। मैं आयोजकों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपने हमें ये कहा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you. Very interesting talk. Yeah. In fact, we know everything. Means a lot of things. We have 10 minutes to discuss question answer. Please note that questions should be specific and short. Please introduce yourself first, and then you can ask questions. Okay, floor is open. मैं आपको चेयरपर्सन को प्रणाम करता हूं, और आपको आपकी विद्वता के सामने नतमस्तक होता हूं। मैं यहाँ आने में बड़ा रिलैक्टेंट था कि चलूं कि न चलूं, लेकिन कल के बाद आज की जो प्रातः है, ये वाग्देवी का आशीर्वाद आपके माध्यम से मिला। मैं यहाँ आकर के अपने को धन्य समझता हूँ कि मैंने आपको सुना। वो सारे बिंदु जिनको आपने उठाया, अगर इसकी चेतना नीति निर्धारकों के भीतर आ जाती या विश्व मंच पर आती, कभी आएगी भी, ऐसा नहीं है। मैं आई एम नॉट पेसिमिस्टिक, मेरा आशावादी नहीं हूँ, लेकिन यही चिंतन जो आज हुआ है, इस चिंतन को जो सेमिनार के ऑर्गेनाइजर्स हैं, अगर अपनी रिपोर्ट में प्रियम्बल मान लें और इसको भेज सकें, जो हमारे विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन अप टू द पूरा ऑफ वर्ल्ड, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट आपके सेमिनार का होगा, जो गया से ही जा रहा आया तो दिवाकर भाई की तरफ से जाएगा गया से। गया मैंने ना 2027 सीखे में ना गया ऐसा क्या कि लौट में नहीं किया। आज आपने मेरे जैसे दुराग्रही, जो मैं बहुत ज्यादा दुराग्रह से ग्रसित रहता हूँ, मुझे अच्छा लगा कि आल्विन टॉफलर को थोड़ा मैं पसंद करता हूँ, जो वो थर्ड वेव लिखा, और ये दुनिया की जो 3 सिविलाइजेशनल वेव्स हैं, अग्रेरियन, इंडस्ट्रियल, और 4 अक्टूबर 1957 जब स्पुतनिक सक्सेसफुल हो गया, STR साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन, इसको थर्ड वेव का। थर्ड वेव में उसने जो शब्द दिया है कि थर्ड वेव की ये आदत है कि वो 2 ही जगह देखता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, और उस कल्चर को उसने मिला के कर दिया प्रोज्यूमर शब्द कर दिया, प्रोडक्शन और कंज्यूमर को मिला के तो नहीं है, तो वो प्रोज्यूमर करते हैं, बच्चों के लिए है प्रोज्यूमर कल्चर। प्रोज्यूमर कल्चर में जो सबसे बड़ी चुनौती है, दुनिया की जो चुनौती है, और वो बिल्कुल साइको एनालिटिक लेवल पर है, जो आपके दोस्त ने लिखा किताब द इंटीमेट एनिमी, अर्थशास्त्रियों को तो पढ़ना चाहिए क्योंकि वो साइको एनालिसिस है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हमारा कॉलोनियलाइजेशन जो है वो बढ़ा, फैंटेसी बढ़ी है, कॉलोनियल रोमांटिसिज्म बढ़ा। ऐसे में टॉफलर ने जो चुनौती दिया फ्यूचर साथ में पहले थर्ड वेव से पहले 72, तो चुनौती है टाइम का ओवर फ्रेगमेंटेशन टू द लेवल फ्रॉम
फ्रॉम जेप्टा सेकेंड टू नैनो सेकेंड। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो डेवलप्ड हो, चाहे वो एलीट हो या बिल्कुल, उसमें चुनौती है सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द मासेस विद द मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट। मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट आपने कहीं चंद्रमा की तरफ से सोचना और आदमी चलता है कदम। सर्वोदय का सारा भू के दान के लिए पैदल चलना पड़ा, लेकिन हे राम की स्थिति में लाने वाले को पूजने को लोग तैयार है। और फिर हे राम के प्रथम शिष्य विनोबा को हाय राम का करके 7 दिन 8 दिन 10 दिन हंगर स्ट्राइक पर बैठ के जीवन देना। ऐसे में पेरेनियलिज्म इज द सोसाइटी सब एक साथ नहीं चली जाती, जैसे लिटरेचर वाले कह देते हैं, माफ करेंगे अगर कोई पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, पोस्ट मॉडर्न, ये कितना मिथ है, कुछ शब्दों को ले लेना। पोस्ट मॉडर्न सवाल समय का है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ डेवलपमेंट में पेरेनियलिज्म, सिंक्रोनाइजेशन एंड अंत्योदय, और अंत्योदय को भारत की मनीषा से जोड़ना चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि भारत की मनीषा को आपने जोड़ा। अभ्युदय और निश्रेयस, ये दो शब्द अगर विकास वालों को नहीं समझ में आते हैं तो वो कभी बहुतायत जन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे, जिसको आपने जनता का कहा। इसलिए प्रो पावर डेवलपमेंट, प्रो पीपुल डेवलपमेंट एंड प्रो रूरल डेवलपमेंट जो आपने कंक्लूड किया है, मेरा जितना पुण्य हो आपको मिल जाए। धन्यवाद। Okay. Yeah, you can go. एक केवल अन्याय हो रहा था, चेयरमैन अधिकारी साहब जो कि अधिकृत चेयरमैन है, मैं अगर आपसे परमिशन लेके एक निवेदन करना चाहता हूँ। ये जो कन्वीन कर रही हैं श्रुति, उनको अगर पुरुष समाज परमिट करे तो आगे बैठने के लिए कहे। कल से ही वो पीछे बैठा, उसको बड़ा आगे लगा है, किसी सत्र में नहीं बनाई गई और न्याय की बात हम कर रहे हैं। जनरल जस्टिस अध्यक्ष महोदय, अर्थशास्त्र के ख्याति प्राप्त विद्वान दिवाकर जी, सभा में मौजूद अर्थशास्त्रीगण, एक डायरेक्शन उनका है कि परिचय देते जाइए। तो मेरा पहला परिचय कि मैं इस गया महाविद्यालय का 1966 से 68 तक ग्रेजुएशन का छात्र रह चुका हूं और अंतिम स्टेज मगध विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र के विभागाध्यक्ष, समाज विज्ञान और प्रबंधन के संकाय अध्यक्ष के रूप में मैंने सेवानिवृत्ति प्राप्त। मैं धन्यवाद देता हूं दिवाकर जी को, जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक चेतना के साथ इस विषय वस्तु को जोड़ा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि जिसे परिपूर्ण कह करके इन्होंने व्याख्या की, वो तो हमेशा परिपूर्ण रहता है। समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने, एक ड्राम निकालने, पानी का स्तर नहीं घटेगा, लेकिन समुद्र के स्तर को जो हम इस तरह से प्रदूषित करते चले जा रहे हैं, वो एक जटिल समस्या बन सकता है। सवाल पैदा होता है कि हम पुरुष और प्रकृति, दर्शन शास्त्री अलग अलग इनके संबंधों की व्याख्या कर सकता है, लेकिन अपने इन्वायरमेंटल एनालिसिस में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम प्रकृति की बातें करते हैं, जिसका लगातार क्षरण होता है। क्यों क्षरण हुआ? क्योंकि भोगा न भुगता, वयमेव भुगता। तुलसीदास ने कहा कि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी। गांधी जी ने कहा नेचर हैज गिवन एनफ टू सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द पीपल, everybody's needs but not the greats। तो हमारे जो ग्रेड्स हैं प्रकृति को बर्बाद करते चले गए। आज सवाल पैदा हो रहा है कि हम चेतन भी हुए, विकास की जिम्मेवारी भी ली,
तरह तरह के स्कीम भी बनाए, लेकिन भटक गए। बातें हैं कि ग्रोथ विदाउट इक्विटी इज रूटलेस, बट इक्विटी विदाउट ग्रोथ इज रूटलेस। अब दोनों में सामंजस्य कैसे कायम? हमने अपनी सारी एनर्जी वहां लगा दी जो कैपिटल ओरिएंटेड, और बाद में सारी एनर्जी लगाते चले जा रहे हैं जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ओरिएंटेड। लेकिन होता क्या है? इट इज पॉसिबल टू हैव ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, बट इट इज इम्पॉसिबल टू हैव सोशल जस्टिस विदाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। हमारा ग्रोथ से नहीं हो पाए, तो हमारा ग्रोथ का पैटर्न क्या है? सवाल पैदा हो रहा है। आज हम फिर निजीकरण की ओर जाओ, इनकम बढ़ रहा है, आय बढ़ रहा है, लेकिन किसका बढ़ रहा है? उसमें कॉम्बिनेशन किसका है जिनको प्राप्त हो रहा है? हमें वो राह चुनना होगा, इस पर कमेंट करना होगा कि हमारा विकास का रास्ता कैसे, दोनों अलग करके चलें। जो भी राष्ट्र अपनी गरीबी के निवारण में समर्थ हुए हैं, उन्होंने पॉलिसी भी ऐसी अपनाई है जो ग्रोथ का जनरेशन कर सके, लेकिन हम ग्रोथ का जनरेशन नहीं कर पाते। लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, मैं अप्रिशिएट करता हूं उनकी विद्वता को। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, ये अल्टीमेट गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। लेकिन सुखी कब होंगे, सुख की प्राप्ति कब होगी? तो अर्थागमो नित्यमनोहित च प्रिया च भारता प्रियवादिनी च वशिष्ठ अर्थकरी च विद्या हर जीवलोक सुखानि राजन। आय की प्राप्ति पर कैपिटा इनकम का दिखा दिया इन्होंने, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय इंटर रीजनल कंपैरिजन करके कि बिहार कहाँ? हम बहुत दूर है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। दूसरा हेल्थ फैक्टर आ जाता है। ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी बहुत जरूरी है, लेकिन हमारे हेल्थ फैक्टर्स क्या है? भले ही आयुष्मान योजना चल जाए, भले ही सबके लिए हम इंश्योरेंस करा दें, लेकिन हमारे देश में एटलीस्ट इन बिहार में health measures have got the urban orientation. More than 80% of health institutions are located in the urban areas, and more than 80% of doctors like to live in the urban areas. No rural contact, but poverty prevails in the rural areas. इस पर सोचना है। और लास्टली सुख का साधन हमने कहा अर्थकरी च विद्या, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड एजुकेशन। ये गोल है कि एम्प्लॉयमेंट, रीजनेबल एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशन सब सुटेबल मिल पाए, साथ ही साथ फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रोविजन। लेकिन हमारे ग्रोथ एक्सपीरियंसेस व्यक्त करते हैं कि हमने किस तरह का ग्रोथ पाया है। जॉबलेस ग्रोथ, वॉइसलेस ग्रोथ, रूटलेस ग्रोथ एंड फ्यूचरलेस ग्रोथ। This has been our achievement, where we have ignored our nature, where it is very difficult to find out the way to sustainable development, but we have made the effort. With these words, I appreciate, I thank the scholar, the great economist of the state, Diwakar ji. He has awakened us. He has joined the Adhyatmik Chintan के साथ, तो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। और मैंने आपका समय बर्बाद किया है, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। You can take a one session. You are due to time limitation. Okay. I will not take a I mean, it's my first listen to Professor Diwakar. I'm very happy to listen to him. And very wonderful and enlightening lecture, sir. Thank you so much. My question is situated in the larger political economy of the politics of the world. With this globalization-led development, do you think the national states, the sovereign nations, really have the sovereignty in order to decide the models of development in the larger political context, whether it be the Gaya, Bihar, or India?
Thank you for appreciation and comments and question as well. हरकेश बाबू ने तो जो कुछ कहा वो आशे बच्चन है, इसलिए कुछ नहीं कहूंगा उस पर। विशाल बाबू ने भी कहा कांग्रेस हम लोग एक ही ग्राउंड पर हैं। एक बात उसमें सिर्फ मैं जोड़ दूं कि जब हम हेल्थ की बात करते हैं ना, तो नॉर्मली हम लोग क्यूरेटिव हेल्थ की बात करते हैं। बोर्ड कमेटी रिपोर्ट 1940 में हमारे देश आजाद हुआ था, दुनिया में उसी समय में बोर्ड कमेटी रिपोर्ट आई थी जिसने प्रिवेंटिव हेल्थ की बात, और हमारे चेतना में प्रिवेंटिव हेल्थ आज भी गांव जो जीता है वो प्रिवेंटिव हेल्थ के अपनी चेतना से जीता है। हमारे डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं उनके पास। ये बात दिगर है कि अब हम वहां से गंधी और धनुष जैसा मिटाते जा रहे हैं, अपने यहाँ से अब नहीं मिलता है। नहीं तो लोगों का हाथ कटता था तो गंधी निकाल के उसके रस लगा देते तुरंत में, हमें चिंता और आयोजन की जरूरत नहीं होती थी। हम उसको समेटे नहीं, इंटीग्रेट नहीं किया, लोकल विजडम को साइंटिफिक विजडम के साथ हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया। और जो डेवलपमेंट हुआ उस डेवलपमेंट के साथ लाइफ स्टाइल को जहां जोड़ना था वो हम नहीं कर पाए। लाइफ स्टाइल को अगर हम अपने स्वास्थ्य और जीवन के सवाल से, आपने ठीक कहा है फ्यूचरलेस ग्रोथ की तरफ हम जा रहे हैं। हम फ्यूचर के बारे में सोचे होते कि नौबत ही नहीं आती। आई फुली एग्री विथ यू। नौजवान ने सवाल बड़ा किया है, कुछ शब्दों में उत्तर नहीं हो सकता, लेकिन दो बातें मैं साफ कर दूं। आई फुली एग्री कि पॉलिटिकल इकोनॉमी का जो सवाल है अभी के स्थिति में ये ग्लोबल फाइनेंस कैपिटल से रूल होता है। हम जिस डिपेंडेंस सिंड्रोम में चले गए हैं उसके कारण से अगर हमारी सैलरी बढ़ानी है तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है। मिडिल क्लास हमने जो तैयार किया है, निशा की किताब मिडिल क्लास पर बहुत अच्छी किताब। ये मिडिल क्लास जो दुनिया में इतिहास में एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है, प्रगतिशील भूमिका निभाई है, अनफॉर्चुनेटली भारत का मिडिल क्लास, माफ करिएगा, लैकीज के रूप में काम किया, पिछलग्गू बना है। और ये संसद को संसदीय दलदल के राजनीति में रख दिया। संसद को संसद नहीं रहने दिया। राज्यसभा पुनर्वास केंद्र हो गया है, जिसको जनता रिजेक्ट कर देती है वोट में, लोकसभा में, उसे नॉमिनेट करके हम राज्यसभा भेज देते हैं। बना किस लिए था राज्यसभा? इंटेलेक्चुअल, हर फील्ड के इंटेलेक्चुअल वहां बहस करेंगे, कुछ सदन कहा गया था उसको, और वहां एक्सपर्ट रहेंगे, वो कमेंट्स करेंगे, तब जाके चीजें निकलेगी। बजाय इसके हमने कर दिया है कि हमारे कोई प्रिय लोग किसी पार्टी के अगर लोकसभा का चुनाव हार गए तो उसको राज्यसभा से नॉमिनेट कर देते हैं, और आपका ग्लोबल फाइनेंस का दबाव इतना अधिक है कि वो वित्त मंत्री हो जाता है। समझिए इस बात। तो हम नहीं चलाते, ग्लोबल फाइनेंस चला रहे हैं। लड़ाई बड़ी है, और लड़ाई बड़ी इन सेंस है कि जो भूखा है, मैंने कल भी कहा था, आज भी दोहराता हूं, जो घर बनाता है उसके पास घर नहीं होता, जो कपड़ा बुनता है उसके पास वस्त्र नहीं होते, जो अन्न उगाता है वो आत्महत्या करता है। लोग आत्महत्या करते हैं, मैं आत्महत्या नहीं करता हूँ, वो पॉलिसी प्रिवेंट देता है। नीतियां ऐसी बनी है जिसके कारण से वो अपनी जान देने को तैयार होता है। नहीं तो जो दुनिया को खिलाता है वो आत्महत्या करेगा। ठीक उसी तरह से जो नौजवान तैयार होते समाज बदलने के लिए, विश्वनाथ बाबू के इस बात से हम एग्री करते हैं कि आप स्टडी होना चाहिए, लेकिन इकोनॉमिक मैन नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक्स विथ रैशनैलिटी होनी चाहिए। क्योंकि हम करते क्या हैं, हम आजकल स्टूडेंट तैयार नहीं करते, हम एटीएम कार्ड तैयार करते हैं। बात लंबी हो जाएगी, नहीं करूंगा अभी। हम माइग्रेटरी बर्ड तैयार करते हैं। जो गांव में रह गया उसको हम बेवकूफ कहते हैं, जो शहर गया उसको होशियार कहते हैं, जो जिला से बाहर राज्य में गया और होशियार, जो देश में चला गया और होशियार, जो देश से बाहर चला गया वो सबसे होशियार। तो ये जो माइग्रेटरी बर्ड तैयार करते हैं, जो कैपिटल कंटेंट में भाग जाता है और पलायनवादी होकर के वो जो चैलेंजेज है उसको काउंटर करने के बजाय, ज्ञान के साथ करने के बजाय, उसको समेटने की क्षमता हम स्टेट में डेवलप नहीं कर पाए। स्टेट उसको समाहित नहीं कर पाती है। उस व्यक्ति का भी दोष नहीं है,
उसके लिए हम अवसर नहीं जुटा पाते हैं, यहाँ उसको जाना पड़ता है, वो अपने ज्ञान का उपयोग यहाँ नहीं कर सकता। तो ऐसे परिस्थिति में जो हम तैयार करते हैं लोगों को, वो मनुष्य तैयार ही नहीं करते, हम तो कारखाना के लिए लोग तैयार करते हैं और कारखाना ऑटोमेटेड होता जा रहा है। अब तो हमारे प्रधान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं। अब कहाँ पहुंचे थे कीजिए, हमारे गांधी ने कहा था कि हाथ को काम मिलना चाहिए तो लोग दंगा नहीं करेंगे। हम हाथ बेकार रहना चाहते हैं कि दंगा हो। हम कहाँ हैं? पॉलिटिकल इकोनॉमी का कॉन्ट्राडिक्शन इतना शार्प है कि आज के तारीख में समाज में अगर हमको समेट के कहना पड़े तो मैं कहूंगा कि पीपुल एज ए सब्जेक्ट और पीपुल एज एन ऑब्जेक्ट में फर्क करना पड़ेगा। हम ग्रोथ सेंट्रिक होकर पीपुल एज एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। लकड़ी है, इसे अलमीरा बना लीजिए, कुर्सी बना लीजिए, खंभा बना लीजिए, कलम बना लीजिए, जो करना हो कर लीजिए। मनुष्य या जीव जो है ये लकड़ी नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, उसमें सृजनशीलता है, पोटेंशियलिटी है। उसके पोटेंशियलिटी को रियलाइज करने का एटमॉस्फेयर दीजिए, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस दीजिए, सॉफ्ट एंड हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दीजिए। एआई की बात आप करते हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जीएसटी के लिए तो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंस्टीट्यूशन खोला ही नहीं और आपने जीएसटी लागू कर दिया, लागू हो ही नहीं सकता। जितने बार, अब तो सैकड़ों बार वो डिवाइड हो गया अभी तक, हमारे पास ब्लूप्रिंट है ही नहीं। ठीक उसी तरह से आप एआई की बात तो करते हैं, लेकिन ये जो लोग रिप्लेस होंगे वो कहाँ जाएंगे, उसका कोई इंतजाम नहीं है हमारे। अस्पताल में रोबोट काम करेगा, ये तो आपने कर दिया, लेकिन हमारे नर्सिंग वाले जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, उसका रिहैबिलिटेशन का क्या होगा, उसका स्किल अपग्रेडेशन का क्या होगा। जो लेबर मार्केट आप चेक कर रहे हैं, लेबर मार्केट इधर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, जहां 90% इनफॉर्मल सेक्टर में है, कहां से चलेगा। मैं कहना ये चाहता हूं कि सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की तरफ मूव करना है। हम अभी फंक्शनल डेमोक्रेसी भी हमारा वीक होता जा रहा है और हम सब्सटेंटिव इक्वालिटी और सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इस दौरान बाजारों को पढ़िए, बहुत बढ़िया रीडिंग है जो आपको सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी की बात करेगा, सब्सटेंटिव इक्वालिटी की बात करेगा। ये पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन ही है, लेकिन ये पॉलिटिकल इकोनॉमी क्वेश्चन उनके हैं जो भूखे हैं। और हमारे यहाँ विजडम आज नहीं, बहुत पुराना है, जिसके पैर न फटे बीमारी वो क्या जाने पीर पर है। जिसकी बीमारी फटा है उसी को इलाज करना पड़ेगा। जो कहते हैं सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका नहीं, जिसकी पीड़ा उसका प्रयास, ये करना पड़ेगा, तब लड़ेगा। जो दुनिया का इतिहास दबा है, जो भूखा है वही लड़ता है, जो खा लेता है वो नहीं करता, जिसको नौकरी मिल जाती है वो नहीं करता है। वो लड़ेगा तो अपने पेंशन के लिए लड़ेगा, अपने डीए के लिए लड़ेगा, अपने सुविधा के लिए लड़ेगा, वो नहीं लड़ेगा। और उसी में खो दिया सर, हम रेगुलर सर्विस से हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए। आज हमारा एजुकेशन ठेका पर चल रहा है, स्वास्थ्य ठेका पर चल रहा है, कल इस पर चर्चा होगी, सारे मित्र हो गए हैं। तो अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को देखना चाहते हैं तो भी पीपुल सेंट्रिक, और अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देखना चाहते हैं तो भी पीपुल सेंट्रिक, और जो जिसकी पीड़ा है उसका प्रयास करने के लिए एक नया पॉलिटिकल इडियम डेवलप करना पड़ेगा। पुराने से नहीं चलेगा, घिसा पिटा स्लोगन नहीं चलेगा, लीडरशिप भी घिसा पिटा नहीं चलेगा। जनता ये बात अब देख रही है, इसीलिए आप देखिए कि पार्टी से अलग निकल के जनता सड़क पर आ रही है, चाहे शाहीन बाग हो या किसान का आंदोलन, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं चल रहा है। लोग अब अपने ढंग से चल रहे, क्योंकि अब जो पॉलिटिकल पार्टी है उस पर ही भरोसा नहीं है उनका। तो जो संसदीय दलदल संसदीय राजनीति में देश फंसा हुआ है, उस बीच में एक नई पॉलिटिकल इकोनॉमी गढ़ने की आवश्यकता है, नए पॉलिटिकल इडियम्स की आवश्यकता है, और वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी एनालिसिस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत होगी। काम बड़ा है, लेकिन शुरू उसको करना होगा जिसका फ्यूचर एट स्टेक है, मतलब नौजवानी। शुरुआत उन्हीं को करनी है, रिस्क वही ले सकते हैं। भगत सिंह पैदा हुए सब चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं दूसरे के घर में पैदा। थैंक यू। We don't have time. Sorry. माइक दीजिए ना, माइक। डिफॉल्ट पीरियड में और पोस्ट डिफॉल्ट पीरियड में जॉब अपॉर्चुनिटी खासकर पोस्ट डिफॉल्ट। तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि उस पीरियड में 1991 के बाद
आज तक पॉपुलेशन ग्रोथ का रेशियो क्या है और एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का रेशियो, इसके अनुसार अगर साबित किया जाए तो यह माना जा सकता है कि एम्प्लॉयमेंट रेशियो घटा। अगर उस अनुपात में देखा जाकर कोई आंकड़ा आपके पास है तो उसको अगर पॉपुलेशन ग्रोथ के रेशियो से ऐड किया जाए तो हम लोगों को ज्यादा समझे। We have our next speaker ready. In interest of time. मेरा क्वेश्चन ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसमें हमारी बात चर्चा चल रही है अभी, उसमें सर 1978 में एक रिपोर्ट था, रटलैंड रिपोर्ट का मतलब दूसरा नाम हमारा साझा भविष्य था। उसमें 3 मुख्य बातों पर सब ध्यान दिया गया था, पर्यावरण सतत विकास, इकोनॉमिक सतत विकास और एक था फिर विकास। लेकिन सर मुश्किल ये आ रही है कि पर्यावरण सतत विकास जो हमारा है उसको सर कैसे डेवलप किया जाए, और 21वीं सदी में अभी के समय में जो बात आ रही है ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स की, उसको कैसे डेवलप करें। Okay, only one question. If you have. देखिए, जहाँ तक पोस्ट रिफॉर्म्स की बात है, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट लगता थोड़ी देर बाद आ पाए हैं, इसलिए आपको बीच के आंकड़े विश्लेषण दिखा, लेकिन वो नहीं दिखा जिस प्रेमाइस को लेकर मैंने शुरू किया था। मैंने इन दोनों को निगेट किया है बेसिकली। यदि आप वहां जाएंगे कि पॉपुलेशन के बेसिस पर देखें तो मैं थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। 1951 में हमारा बेरोजगारी दर क्या था? उस समय तो एक्सचेंज में हमारा बेरोजगारी रजिस्टर होता था, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो डॉक्यूमेंट है उसमें 53 लाख का दिया हुआ है आंकड़ा बेरोजगारी का, और 17 में आके वो 2 करोड़ हो गए थे। तो यदि पॉपुलेशन मैटर करता तो 17 में पॉपुलेशन कितना था हमारे पास, और 17 में बेरोजगारी की दर कितनी थी? निश्चित रूप से बेरोजगारी की दर जो 53 लाख से 2 करोड़ पहुंचा, 5 गुना, पॉपुलेशन 5 गुना नहीं बढ़ा। मतलब क्या बताता है कि पॉलिसी जिम्मेदार है। और आप जिसमें स्वर्ण सिंह हमारे हेल्थ मिनिस्टर हुआ करते थे, वर्ल्ड में WHO में भाषण देने गए थे तो उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्ट। अगर हम उस डेवलपमेंट को ध्यान में लेकर चले होते तो फिर कैसा डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट? विश्वनाथ जी बहुत अच्छे तरीके से इस बात को कह रहे थे। मैं समयाभाव में बहुत बात नहीं कर सकता हूँ, हमारी सीमा है, लेकिन एक बात बहुत तय है, ये प्री और पोस्ट के इस 10 साल इधर और 10 साल इधर के एनालिसिस में सिर्फ इतनी बात होती है कि घटा और बढ़ा, लेकिन ऑन दी मूल अगर आप जाएंगे तो हमारा पूरा भारत का विकास का जो क्रम है वो सातत्य विकास की तरफ है ही नहीं। इसको हम उस लिहाज से फौरन इसको रिजेक्ट करते हैं, अगर हमें मौका देंगे आप। जहां तक आप सेंसस की बात करना चाहते हैं तो भारत सरकार तो ये परमिट ही नहीं करती है, 2021 का सेंसस ही नहीं करे, वो डाटा ही नहीं आपके पास, मैं कुछ कह ही नहीं सकता। जो भी कहूंगा 2011 उससे पहले की बात होगी, उससे बात का नहीं कर पाऊंगा। आपने जो बात कही कि पर्यावरण को कैसे चलाएं और समझे, देखिए पर्यावरण की हवा भी नहीं होता है, जीवन शैली के साथ पर्यावरण की बात अगर आप करना चाहेंगे, अचानक से नहीं हुआ है। 100 वर्ष में हमारा टेम्परेचर बढ़ के 1 डिग्री या 1.5 डिग्री बढ़ा है, और उसी 1.5 डिग्री में ग्लोबल मेल्टडाउन का जो आइस मेल्टडाउन का हालत हो गया है, कहाँ कहाँ प्रलय की स्थिति बन गई है, एक अलग सवाल है। हमारे जो ओजोन लेयर बिगड़ा है वो एक अलग सवाल है। अनक्रिटिकली जो हमने पोटासियम और नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया है, लेकिन हमारी जमीन ही खराब हो गई और इमिशन भी कार्बन का ज्यादा हो गया। उस CSIR का रिपोर्ट आ गया है कि आगे भी ये बढ़ेगा। तो यदि आप इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो शायद ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इसका कोई पैबंद लगा के कोई आंसर ढूंढे कि कहीं पर छेद है उसको चस्पा कर दे, कुछ ऐसा नहीं है। अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना चाहते हैं तो सस्टेन्ड स्ट्रैटेजी की बात करेंगे, और सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी के लिए सस्टेनेबल व्यू चाहिए, वर्ल्ड व्यू चाहिए।
बिना उसके नहीं होगा। शॉर्टकट मेथड इसका नहीं है। मैंने अंत किया था ये कहते हैं वही रास्ता है। एक रास्ता है कि आग में पक के सीखिए, दूसरा है कि या दूसरा रास्ता है कि जो ज्ञान है दुनिया का उससे सीखिए, लेकिन संभलना आप ही को है, भोगना आप ही को है। जो भविष्य में जिएंगे भोगना उन्हीं को है। आप भूख के लिए, जाग के लिए। अंत करता हूँ वीरेंद्र मजूमदार के लोक गंगा यात्रा की एक उक्ति से। लोक गंगा यात्रा उनकी किताब है, जरूर पढ़ लीजिए। आप में से बहुतों ने पढ़ा होगा। कोई कहानी कहते हैं। देखिए दार्शनिकों की खासियत यही है। वीरेंद्र मजूमदार काशी विद्यापीठ में एक नई संस्कृति के साथ चीजों को शुरू की थी। इतना बड़ा साइंटिस्ट और वहां बैठ के वो मिट्टी में काम कर रहे थे। कई आश्रम खोले उन्होंने, कई तरह से लोगों को चेतनशील करने की कोशिश किया। एक बात जो उन्होंने कही वो इम्पोर्टेंट है। कहा कि जब लोगों के बीच में संवाद करते हैं तो इडियम्स हमारा, लोगों कम्युनिकेशन स्किल हमारा क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक महात्मा था जो एक नदी के दोनों किनारे लोग थे। एक तरफ सूखा स्थिति था, दूसरी तरफ बहुत हरियाली की स्थिति थी, बीच में नदी बहती थी। तो महात्मा ने कहा कि ये जो निर्जन में बैठे हो सूखे में, नदी के उस पार बहुत बढ़िया उपजाऊ जमीन है और हरा भरा जिंदगी है, चले जाओ नदी पार कर। ये अंदाज नहीं आया कि उसको तैरना आता है कि नहीं आता। तो चल पड़े एवरेज लगा करके, और बीच नदी में जब डूबने लगे तब लोग कहने लगे अरे इससे अच्छा तो वही था, कम से कम डूब तो नहीं रहे। तो आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बहस है वो यही है, इससे अच्छा तो वही था, नहीं रहे थे। हम वहां जा नहीं पा रहे हैं, वो स्किल हमने नहीं बनाया कि हम तैर के उस पार जाए। तो हम अपने को कोस नहीं रहे हैं, स्ट्रक्चर हम नहीं तैयार कर पाए, लोग नहीं तैयार कर पाए। Yes, I'm going to continue. Instead of going to that, what we are saying that earlier was better. इसीलिए प्री पोस्ट के धंधे से थोड़ा निकलना चाहिए हम लोगों को, लॉन्ग रन व्यू के साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करना चाहिए। धन्यवाद। Thank you, thank you. I respect you. No, we don't have time. Sorry. No, we don't have time. We have a job. No, we have to work on the time. Sorry. Sridevi ma'am, you can go for your screen share. Also, you can unmute. Yeah. We will start with the next session. Please, we don't have time. आप बाद में अकेले बात कर लीजिएगा सर से, कोई बात नहीं। Organizers, please respect time. और next presenter को हम लाएंगे। Organizers, camera person. Ma'am, you can go full screen. I can see. Ma'am, you want to go full screen with it? Oh, ma'am, you can stop share and share again. Thank you, sir. I respect you. Due to time limitation, I could not. Please invite Professor Gummadi. Okay, I'll invite. Yeah. I request the technical team to join with the Zoom link. This session and then you can go. Yeah, okay. And then after it. Yeah. We know the meaning of Diwakar. We know the meaning of Diwakar. Actually, this talk is only related to Diwakar as well. It provides the Prakash lights for us. Yeah. We understand this. Actually, in the 4 point, we can conclude this. We should understand Bodh and Chetana. There are differences. And Bodh may not be sufficient. We should understand the Chetana as well. First, due to different khichadi policy, we received jobless growth. This is the conclusion 1 point. And inequality is increasing day by day, but we cannot see in the official data. There is different thing. And we need pro-poor policy, pro-poor ideology and politics. It should be, it will change the structure and institution of ideology. That's why this is most important. But we have to think from the people should be treated as the subjects, not the object. We have to think that way. Yeah, this is the conclusion this session. Yeah. And I'd like to invite Sridevi
Yeah, she is a professor. Yeah, professor of School of Economics, University of Hyderabad, and she is going to talk about the sustainable development. She will get only 20 minutes, and we have the 5 minutes only for the discussion. I already decided this. Yeah, please. Yeah, I like to invite her to join in the online. Ma'am, Online, okay. Professor Gummadi, School of Economics, University of Hyderabad. Ma'am, if you can hear me, just respond. Yeah, can you see the We can see slides? it. Okay, a very good morning to all. And Ma'am, can you just unmute yourself and say hi or hello so that we can know that you are on board? can you hear me? We can hear you. Yes. Okay. Okay. Hello, good This morning, is ma'am. Sridevi from Yes, ma'am. We welcome you from Gaya Department of Economics, Gaya College, Gaya, to this international conference on sustainable economic development of India, issues, challenges, and opportunities. Ma'am, am I audible? Ma'am, can you? I can hear. Can I start my Yes, talk? ma'am. Sure, you can go Yes. ahead. Thank you, because Go I ahead, was Mr. given Ranvijay. 20 minutes. I'll try to wind it up within the 20 minutes. Yes. I thank the organizers for giving me this opportunity. Today, I'm going to speak on food security and child malnutrition in the context of India. Considering the macro level data, which is available from various rounds of the NFHS as well as NSSO, and some of the micro level studies, what we have conducted as a part of our one of our IOE ongoing project, as well as the previous projects supported by the ICSR. So I will basically. Okay. Ma'am, you can keep. I think there is some issue when I go for the full screen, so I will use this now. I think now you are able to see it, right? Okay. So my presentation basically looks at why the food and nutrition security issues are important in the present context of the sustainable development goals, as well as when we are talking about the economic power. And then we'll move on to the concept of the food and the nutritional security, and with specific reference to the child malnutrition, considering at various micro level studies. So what is the basic context when we look at the food and the nutrition security? Majority of the economists try to argue that where is the need to talk about the food security related issues when we have the surplus food grain production over the years. But when we have one side, the paradoxical situation is we have one side the food grain surplus production, but the other side we also have the children suffering with the acute malnutrition with the different forms of the stunting, wasting, or the underweight. And it is also observed from the literature that any climate changes impacts will also reduce the production over the time period also. So with the changes in the climate and the other economic aspects, the food security related issues are going to be an important issues in the long run. And is it the question of only the underdeveloped nations, or is it the question of only India? No, most of the world is suffering with the food insecurity, as well as more specific to it, nutritional insecurity also. We see that over the time period, given the FAO from 2005 to 2030, actually it is very clear that majority of the countries in the world are going to increase the number of the people suffering with the undernutrition. And if you look at the literature existing or the various studies existing, it is very clear that the most developed nations like Australia, France also have been facing the concept of the undernutrition. But the problem of this undernutrition is largely hidden in most of the cases, because it's a faceless and the very silent also.
And most of the time, food insecurity and the physical and or the mental ill health, poor performance of the studies, and difficult navigation of the social relationship. Many times we feel that the food insecurity was especially there is some kind of the shame is associated to express that we are actually suffering with the food insecurity or the malnutrition. So if you look at the global hunger index, also nearly 690 million people are undernourished and 144 million children suffer from the stunting, which is a sign of the chronic undernutrition. And there were also many studies which indicate that the cognitive skills of the children and the long-run productivity of the children depends upon their nutritional levels also. The recent large study using the Young Lives data by Professor Ashwini Deshpande very clearly shows that there is a negative impact of the malnutrition on the long-run cognitive skills of the children also. But given the various rounds of the global hunger index score, it is very clear that we have been improving. But the rate of increase is not very favorable when we see the rate of increase in the per capita incomes or in terms of the population growth or in terms of the production of the agricultural food grains, basically. So the UN State Food Security and the Nutrition in the World very clearly says that the number of the malnourished people are 189.2 million during 2017-19, but the rate of decline is rather slow. A sad irony given that India is the second largest food producer in the world. But there is also another kind of an argument. Some of us tries to say that the global hunger index data or the ranking itself is something there is an issue with reference to the methodology. And if you look at the rankings, we always see that some of our neighboring nations, small nations, are doing much better when compared to the India. So the argument what the state tries to put forth is that the methodology itself is something wrong. But the global hunger index data, whatever we are supplying, is based upon the undernourishment and the child wasting, child stunting, and the child mortality. And if you look at our own actually reports of the NFHS 5, it is very clear that from NFHS 4 to 5, the 16 states have shown a tremendous increase in the number of the children suffering with the stunting or wasting or the underweight. And the recent study by the Hunger Watch also shows during pandemic, they have conducted 2 rounds of the primary level data and try to bring out the various issues related to the hunger and the malnutrition. 2020 after the first lockdown and again 2021 after the second lockdown. So these reports also very clearly shows that over 2/3 of the respondents across the 11 states in October 2020 shows that there is actually decline in the food consumption compared to the February 2020 after the first lockdown. So the second wave and resulting burdens of the health expenditure as well as localized lockdown has once again risked the livelihoods of the many, especially the agriculture labor as well as the daily wage laborers as well as the vendors also. So the second round of the survey, which was conducted in 14 states, the report says that 41% of the households surveyed reported that the nutritional quality of their diet had deteriorated as compared to the pre-coronavirus pandemic levels. The report also said that while 90% of the households that had a ration card said that they received some food grains, 25% of those eligible said they did not receive any benefits of the midday meal scheme or the integrated child development service programs. So from the report, if we quote it, there have been days when the whole family had to sleep without eating in the night due to lack of all ration in the household, and the family was unable to afford it.
we have not consumed eggs, non-veg, or the fruits in the last 1.5 months. A woman respondent whose identity has been concealed was quoted as saying in the particular report. So some of the major findings of the second study was that almost 80% of the surveyed households reported experiencing some kind of the food insecurity, and 60% of the households reported a fall in income during the pandemic. Approximately 45% of the households has outstanding debt that has influenced the intra-household consumption, and also it also led to the gender discrimination also at the household level. So the contradictory now, the paradoxical situation is that the situation when we look at the FCI's stocks, it reflects the situation of the ship to mouth, as the godowns are overflowing with the food grain stocks, and the union government is unable to ensure remunerative prices to the farmers for their produce. And that is the situation with the many of the major states also. And although we are also in the process of the one nation, one ration card, but it is also very clear that even now majority of the desired households lack the ration card also. So the hunger, which is the inability to acquire or consume on adequate quality or sufficient quantity of food, is what we consider as an important aspect for leading to the nutritional insecurity also. So in that context, food security as a function of welfare is often attached with the human rights, health, and development of the society. Therefore, food security can be justified as an essential element of the welfare and is regarded as the most prominent right of the people to have an adequate amount of the nutritional food security. So if you look at the last few years, there is also decline in the employment growth rate and real wages more or less at this stagnant. And we also see since last 1 year, there is a rise in the inflation, food inflation also. So the invisibility of the ongoing hunger crisis in the country in the wake of COVID-19 also stems from the dearth of the official data. Because when we actually try to get the data related to the hunger deaths, the starvation deaths in the Indian context, it is always difficult to get an official data. But there are few NGOs who try to collect during the first pandemic lockdown situation, what was the hunger deaths rate. Basically, they try to call it as the non-COVID deaths. So it is very clear that among the non-COVID deaths, the majority of the deaths are is due to hunger or various forms of the livelihood insecurity, which actually led to the deaths. Now, in the Indian context, India was actually trying to increase their food availability in terms of the production. Also, it is also trying to improve the economic access by following the different state support programs, such as the public distribution system and also food for work program, as well as the various other employment guarantee schemes. Even then, we see that by 2015, we could see that there is actually huge number of the people suffering with the food insecurity. So that was the period when it was argued that the food is the actually basic right of the individual, and we need to follow the rights approach. That actually led to the National Food Security Act of the 2013. And now with that, we also see few studies saying that National Food Security Act has actually helped positively in improving the nutritional security at the household level. And there were also studies showing that there are also large targeting errors also with reference to the National Food Security Act also. But there is also now the extended debate along with the right. It is the culture of the given individual, or what to eat, what not to eat, actually depends upon the
culture. So a sovereignty should be given to the individual. What they prefer to eat should be decided by their culture, not the other rules or the state. Because, for example, some of the states under the midday meal program, center says that they are supposed to be supplied everyday egg, but some states deny it, saying that we try to provide those proteins with the vegetables and not providing the egg in the midday meal program or in the Anganwadi centers. If you look at a systematic approach of the food security and the nutritional security, food security actually leads to the nutritional security. But providing food security doesn't mean that we are able to provide the nutritional security to the individual, because nutritional security also depends upon the various other aspects, such as the drinking water, sanitation facilities, and then the protein and the fat and the other micronutrient contents of the food, what they are actually supplying. So in providing the food security, different agencies work to provide in terms of the physical access to the food grains. Basically, we have the local markets and the public distribution system, and as well as the own production also. So when it comes to the nutrition, the most important measure what we follow generally is the World Health Organization's score of the mild, moderate, and the severe malnutrition for the children below 5-year-old. And for the adults, we generally use the BMI. So if you look at the data in terms of the food grain production as well as the availability, we have been very positively increasing the per capita net availability, although there were some shocks during the certain years. But overall, we see that the per capita availability is in terms of the surplus per capita availability, in terms of only availability, not in terms of economic access to food. Because that is seen from the figure that in terms of the cereals, although the required norms are here, but we have the surplus production in terms of the cereals. But this is not the situation in terms of the pulses, although India is the largest producer of the pulses, but still there is a huge gap between the required norm of the pulses to be taken by the individual, given by the ICMR norms, and then what we are producing in the domestic production. So in terms of availability, since 1996, the per capita net availability of food grains has increased from 484 to 507 grams per day. So which actually meets the required norms given by the ICMR. But actually the Niti Aayog study very clearly shows that if we want to meet the future demands in terms of the consumption of feed, actually we need to increase the yield per hectare. So the expected yield to meet the required demand by 2030 is the 2,509 kgs per hectare. And there were also various studies with reference to the food demand projections in terms of the considering the current supply as well as the current economic growth and the current population growth. The majority of the studies which are projected say that by 2025, we'll have the surplus. Even 2030, we may have the surplus production in terms of the physical availability. But in terms of the 2050, majority of the studies try to show that there is a gap. That is, there is a deficit in terms of physical availability also. So then the question is that with the surplus food grain production, when we are not able to meet the requirements of the nutritional security with deficit production, can we really think about the meeting the zero hunger by 2030 as given by the Sustainable Development Goals? So the economic access to food is what the most important aspect when we are talking in terms of the food security or the nutritional security. It is not the physical production, because we see that over the time periods, we have the surplus food grain production. So when we look at the relative price trend, it is very clear that there are fluctuations, but the current trend shows that there is an increasing, there is a price volatility, although with the increase in the production.
actually all taking place. But in terms of the consumption of the food grains, which is the basic data from where we get is only various NSS4 rounds, it shows us that the calorie consumption has increased over the years, or even if it is declined in terms of the calories in the rural as well as the urban, but there is a change in the as well as the protein and the fat contents also. And the average per capita intake of calories in India, both in rural and urban areas from the various rounds, it shows a different trend. I think the deviation would give us the correct picture, how we are deviating from the calorie consumption. So which basically shows that there is a change in the consumption patterns from the cereals to the various other food grains also. And the per capita protein intake, both in rural and urban areas also, it is increasing, but most of the rural areas, it is not meeting the required norm, which is given by the ICMR. So in terms of the fat, also we see there is an increasing trend, both in rural as well as the urban areas. So when we see the axis in terms of the economic axis, it is not only the prices of the food grains and the other related commodities, but it is also access to the land and the asset, which plays an important role while providing the economic access to the food grains. So the access to land data very clearly tells us that even now the majority of the farmers are the landless, or the average on average it is the 2.5 acres of the land what they are holding it. And in terms of the households purchasing patterns, basically from the various NSS rounds data, it is very clear that the lower income households as well as the socially marginalized groups, the dependency on the public distribution system is very high. So which means that the public distribution system plays a very crucial role while providing the food security at the household level. So now the question is, there are different arguments that why we need to supply the food grains in kind, why can't we go for the cash transfers, or why can't we go for the different other set of the programs in terms of the state supporting rather than supplying the food grains directly. So the situation of the hunger and exclusion of the people from a subsidized food grains program exists at a time when the stock of the food grains in the godowns of the FCI breached record level. And we also see over the last 1 year increase in the food grain exports also to the various countries. And there is also another aspect is that some of the food grains produced was also used for the various other products rather than supplying it to the under the National Food Security Acts. So all these we need to think about beyond an economic logic. It also raises the ethical issues of using the good quality food grain issuable under the PDS for the manufacturing of the ethanol, or is it the cash transfers which actually gives any kind of the benefit at the household level. So given that background, now we'll just try to look at the nutritional status of the children below 5 years. Of course, already this information has been given by the Professor Diwakar. So I'll just skip the rural and urban aspects. My only constraint here is how the marginalized groups are performing in terms of the malnutrition, and how certain states which are supposed to be having very high level of the per capita income, for example, Maharashtra and Punjab. And if you look at the malnutrition indicators of the stunting, wasting, and the underweight, we'll be surprised to know that these are the states which are having the highest number of the children suffering with the underweight also. So this is very clearly, it shows that there is actually an increase from the 2000, NFHS 4 to NFHS 5, the number of the children suffering with the malnutrition in terms of the various indicators, that is underweight, stunting, as well as the wasting also. So this, when we look at only NFHS 5, even now we find that
some of the states are at a very high level of the alarming level of the malnutrition with the children below 5-year-old. And the only the blue color indicates these are the states who are actually at a better performing in terms of the nutritional indicators. So when we look at the various indicators, the different states gives us the different kind of the picture. This is what I was trying to say, that Maharashtra being the highest in terms of the per capita income, but in one of the indicators of the malnutrition, it has the highest number. And in terms of the underweight, we see that majority of the states are at an alarming rate, which is actually more than 30%. And when we try to actually classify the existing states based upon the NFHS 2 until now, the recent data of the NFHS 5, some of the states moved from the high levels of the malnutrition to the medium level, and some moved from the medium level to the low level, whereas some of the states throughout the record remains to be at the medium level. Wherever they are, we don't see any kind of the major progress in terms of the various indicators. So in terms of the anemia with the children also, we see these are the states who are having the alarming level of the, which basically shows the more than 45% of the children suffering with the anemia. Same is the case with the women also in terms of the BMI. And then the anemia in terms of the women, overall, if you look at around 64.1% of the women in a reproductive age group from 15 to 49 suffer with the different forms of the anemia. It may be acute or it may be moderate or whatever it may be. Now, when we look at the nutritional status of the children coming from the different socially marginalized groups, we see that from NFHS 3 to 4, the rate of decline is much faster when we compare it with the NFHS 4 to 5 among the scheduled caste as well as the scheduled tribes, vis-a-vis with the others also. So the nutrition of the women and the children is important, because although the state tries to provide various state support programs like through Anganwadi centers, midday meal program, ICDS program, even during the COVID, the governments were supposed to make alternative arrangements to ensure that the entitlement was protected, as also mandated by the NFSA. But still, most states have made an arrangement for providing the cash transfers or dry ration. However, the implications has been very, very negligible. For example, in lieu of cooking cost of the midday meal, the cash given was only about the 125 rupees per month. So this mechanical conversion of existing norms of cooking cost does not take into account the economies of the scale involved in providing cooked meal in school, when the infrastructure, cooks, salary, etc. are also accounted for the separately and integrated or brought into bulk, basically ingredients, basically. So in some states, dry ration have been provided instead of the cash entitlements, and these are reported to be better based upon the Hunger Watch data during the 2020. So about 57% of the school-going children and 48% of the Anganwadi beneficiaries said they were not getting any cash or any kind of the food transfers. So if you look at the various indicators of the women, basically in terms of the fertility, literacy rate, and the nutritional indicators and anemia, one of the interesting aspect is that there is a decline in the fertility rate. So now, as per the literature, economic literature, we tend to argue that when there is a decline in the fertility rate, there's supposed to be an increase in the labor market participation by the females also, because that's what's seen in the Western countries also. But interestingly, if you look at the work participation rates across the different social groups or in general, we see that the work participation rates in general is all declining, as well as the work participation rates among the females is also declining. So when we try to look at the relationship between the NFHS 5's
malnutrition indicators of the children and the female levels of the education, just over half the children born to the mothers with no schooling are stunted, compared with the 24% of the children born to mothers with the 12 or more years of schooling. So the prevalence of underweight in children with uneducated mothers is 47% compared to 22% for those whose mothers have some education by wealth quintile. The prevalence of malnutrition decreases steadily with increased wealth. Malnutrition is relatively more prevalent among scheduled tribes and scheduled castes at a national level, while considerable variations exist between the states. There is a strong negative correlation between stunting and improved sanitation also. So then we wanted to try to look at the relationship when we are talking about the HDI and the malnutrition levels. Yes. So whenever there were actually high levels of the I malnutrition. request you, ma'am, to kindly wind up. Yeah. So in terms of poverty also, we see that there is a positive relationship in terms of the income poverty as well as the food poverty also. So and if you look at the multidimensional poverty index report released by the Niti Aayog, it is very clear that even now the major states suffer with the more than 50% of them suffer with the multidimensional poverty. So since there is the time is not there, I don't want to get into the micro level analysis, though I thought, but some of our studies very clearly shows that where our field work is going on with reference to the need of the state support programs in terms of the midday meal program and Anganwadi centers public distribution system, it very clearly shows that the children who have continued in the school from the 1st grade to 5th grade have a better nutrition. Hello, your Professor Sridevi, I request you to conclude your presentation. Yeah, yes, it is done. I think I just made my final statement saying that there is a need for the state support programs in terms of the malnutrition or whatever it may be. That's it. Thank you. Thank you for your very nice presentation. This is a very important issue in our country. Yeah, may I request I'd like to go on the floor to ask some questions. Yeah, maybe 5, maximum 5. Okay. Yeah. Diwakar sir. Thank you. यही वाला माइक है, यही वाला। Thank you, Chairman. Sridevi has presented a brilliant picture. Congratulate you for this extensive presentation. I think this is a problem because of the paucity of time. Perhaps you could not deal with. Otherwise, you should have checked it also. There must be something in your paper. 2 points I would like to know as a clarification from your side. One is very small. When you are talking about HDI rank index from 1870 to 2022, it's a 1970 or 1870? It's a the historical data is available actually. Okay. So we just took it from there. Whereas the recent levels date, although methodologically there are differences, but still we have the data. That was my clarification. That once it is from 1870 to 220, there are methodological shifts. Yes. Can we go through that without having rationalization on it? That is one. Second, you have beautifully analyzed the schemes, working of the schemes, and now you are working on the ground also, taking primary data, and your evidence are plausible. The conclusion you have made is formidable. My question is that
This is about the programs and delivery mechanism where big delivery or governance structure and issues are there. But can we think of sustainable food security in terms of institutional collections, maybe access to production resources to the poor, through which they can have their own nutritional assets and strength, through which, say for example, land redistribution or livelihood relocation, through which they can find their sustainable livelihood. Always depending on government and creating a dependent syndrome in the stage of this anti-poor syndrome. Do you think that this can continue and this is possible to provide this kind of nutritional support to piecemeal services? To me, it appears that unless you think of the access to resources to the poor, and unless you allow them to have the access with equity, the sustainable security question remains a larger question for policy and action as well. Thank you. Yeah. We shall have one more question now. That's it. No, we are running late of time. We have already asked in the last session, so I'll give a chance to that person. And we take a mic over there. Give the mic. Thank you, sir. My name is Abodh Kumar, and ma'am, in your session, you have said that about world reports. Ma'am, don't you think that the data collection method Sorry, of the can you make your question more clear? I was not able to hear it. Ma'am, don't you think that data collection method of world reports like gender gap report, global hunger index, world happiness report are little bit doubtful, flawed, opaque and biased? Why I'm saying this? Because when we see the ranking of India in World Happiness Index, it is 126 in 2023. However, for Pakistan, it is 103, and for it is way behind Pakistan, Sri Lanka, and Bangladesh also. Same with Global Hunger Index. We have 107. We are 107, and same with other ranking also. So don't you think that data is flawed, opaque? Why? Because we don't know that from where they are getting the data. We don't know what is the sample size, and we don't know who are the respondents. Thank you. So, coming to Praka's question that can we actually depend upon the various state support programs and how sustainable they in the long term? The question here is, we have been talking about the redistribution of the land, but how far we are actually successful in doing that actually, except in 2 states where we see that. Even when Telangana was formed, actually, it was said that the scheduled caste households who do not own any kind of the land, the female member of the household would be given 3 acres of the land. So that was the statement what Chief Minister made, and some of the SC/ST sub plan fund was also diverted to that also. But it was hardly, I think, 30 families, although the eligible families around more than 3 lakh, 30 families around were given some kind of a land, which was actually productive. But when we looked at those families, we find that there is a positive impact of this land redistribution to them. The children started going to school, and these lands actually use it for the horticulture or the floriculture. So it actually gave them some economic benefit. So the question of redistribution of land, if effectively we are able to redistribute, it is the best method to provide the economic asset.
but that we are not able to do it. And the second, the skill development. One side, we are arguing that we need to talk about the skill development and we need to improve the employment opportunities. But still, we find that majority of the marginalized groups, especially scheduled caste, scheduled tribes, and the OBCs, do not have the access to the higher education also. And with the given their levels of the income and then levels of inequality, can we really expect them to have a better skills to reach the market, basically? And the question of, can these programs be sustainable? It is a question of the implementation, basically. So because when we visited the 5 villages in Telangana, in one of the village, actually, all the children in Anganwadi center are receiving everyday egg or the hot cooked food. But whereas in the other Anganwadi center, we find that they hardly receive the egg weekly once. Or there is a difference between the rural and the urban Anganwadi centers also. Here, the food comes from the centralized kitchen, where they have a different set of the menu also. So, I mean, when we look at the expenditure, the amount what they're spending for the various, especially in terms of providing the food security to the children, I think it is a meager amount. And when we talk about the public distribution system, I do agree there are various leakages also, because under the National Food Security Act also, we were not able to identify actually who are the poor, who are deserving. There are many cards who do not want the ration supplies, but they get the ration supply and it is going to the open market again at a higher price. They're receiving it at a free of cost, or they're paying just 2 rupees per kg. But in the market, sorry to interrupt you, please wind up. We are 15 running rupees also. for the next technical session. Just one small query in that. When you are talking about that the land has been distributed to some of the houses in Telangana, have you included those households in your sample? Yes, they are. That is, Yeah, because they have the a better, data. yeah. They have a better access in terms of the economic resources, at least. They're able to, but majority of them depend upon the public distribution system for their regular food consumption. And second question, coming to the GHI and GDA ranking, see, I don't think they are actually, their methodology is something wrong. Even if you look at your own data sources and what Niti Aayog is providing us, it is very clear that 17 states are facing the malnutrition indicators, whatever indicator you are taking, stunting, wasting, underweight. So where is the question of saying that their methodology is wrong actually? And the data we are only providing to them, right? And they are considering the mortality and various other indicators, what we are actually measuring it. Our own micro level studies as well as the Niti Aayog studies and NFHS 5, you can't deny that NFHS 5 is wrong, right? So I don't agree the concept of saying that GHI methodology is wrong. One thing, Madam, I appreciate your presentation and your logic behind the presentation. With one observation, you will not take it as a personal comment. ये जो आपने अंत में ये बनाया स्केच वॉच स्टारवेशन, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि फिर तो वो क्या था जो आई आपने बनाया और उसमें स्टारवेशन दिखा दिया, वॉच स्टारवेशन. Okay, so okay. Are you permitting to continue the starvation? I think we have to watch the which of starvation. No, Right from the right. No. That is. That was quite disheartening. The figure was disheartening to person like me. I am not expert of economics, but I am a person, student of education. That's why I am talking. No, but it's a good observation actually. Maybe presentation. Such type of sketches are presented by UNICEF and UNESCO, and that too in case of India. Have you followed that trend? Nothing to do that actually. That painting, it's a painting.
It's a painting actually. It is not That is taken quite from pathetic. not the website or- Pathetic in perception. That was pathetic in perception. basically that painting tries to say us that we have one side the surplus and the other side increased economic growth. We also have the other side people starving to have one day meal also. So the tie basically implies that we are still watching them starving. What best we can do basically is that painting tries to argue. And the second way is that we also have the food wastage also. The food wastage data, our food wastage index of the 2021 very clearly reveals that if India every day 50 kgs of the 50 kilograms per person is getting wasted. I mean, in different forms, basically, we cook more or we just waste it in different forms, whatever it may be. So one side you have surplus, one side you have the huge wastage, the other side people suffering, not having one day meal also. Now, the report, our own reports basically says that 30% of the children below 10 years are not able to have access to the fruit or the good quality vegetables when they reach, until they reach the 10 years. So that is the paradox basically. So that painting tries to give us the paradoxical situation. One good thing has come in our country, and some people have taken the lead regarding participation in Roti Bank. And they are collecting the surplus or the wastages even also. They are processing and they are supplying. And some people are involved in philanthropic exercises in providing the bread to the needy ones. One thing. And regarding the young man's question, the young academician's question, the trend analysis as a researcher, going into the sophistication of the trend analysis, your analysis would have revealed something more from, if it would have been taken from 1870 to 2022, then from 2022 to 1950, up to 1950, and onward, what is the trend? Because we are more interested to know about our own line development and the trend scenario of starvation. It would have been a better service. I am not saying that we have not done, but it requires a relook into or a meta-analytic study of the data. Yeah, that is what actually we did in terms of physical evaluation. From 18th century it has taken. Thank you. Yeah. If there are no questions, can I stop it? Okay. So first time really you are going to ask questions, that way we give to your preference. Hi ma'am, this is Bharti. Yeah. As in India, daily basis, millennials are increasing day by day as per report. India is a developing country and all your report is doubtful. Doubtful in the contest in our country, IMPRI, self-help groups, Ujjwala, Ration, Ayushman, Pradhan Mantri Yojana, everything you have put a big question mark on all these schemes. Till now, when the thing started until date, we have achieved so many things. We have achieved landmarks, but you are still that we have not broken the stone. So what is your opinion? It is your report is wholly one-sided. Tamil Nadu and Andhra, most of the children are malnutrition over there only. Because I live in Bangalore and I very closely studied Kerala, Tamil Nadu, and Telangana. So, what is your opinion about that? Is your not report one-sided? Okay, can I respond to this question? Yeah, coming to your question, I did not say that we did not have a
positive progress with all these programs. I think you would have heard my statement when I said very clearly, all these state support programs play an important role in providing the food and nutritional security. I think you have somehow missed that statement. So I am actually emphasizing there is a need to continue these state support programs. And coming to Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Telangana, Andhra Pradesh and Tamil Nadu are the one of the best states who have actually implemented the public distribution system. And we all know that in 1987, some of the political parties could get into the power on the ground of the public distribution system, basically, saying that once we come to the power, we will be supplying the kg rice at 1 rupee. So that way, the public distribution system played a very crucial role politically also, not only in terms of providing the food security. But what we are trying to say is that the implementation, if it is more effective, whatever you are seeing now in terms of the malnutrition, children suffering with either forms of the stunting, wasting, underweight can also be actually reduced. Okay. And if you look at the data of NFHS 4 to 5 or 3 to 5, we see that it is the Andhra Pradesh where they are actually stable. We don't see any increase in terms of the numbers of the malnourished children, except a small change point. And Tamil Nadu also is the same situation. So I think please look at the NFHS 5 data for more clarifications. Okay. Sridevi, we have one question, only one question, then we will need to conclude our session. Yeah. Sir, kindly, Chairperson, sir, kindly mind. Okay. Okay, we are going to conclude. Thank you for your excellent presentation. Yeah, we appreciate your ideas and your views. Yeah, this is very pertinent issue. You raised many questions, but I can conclude your presentation within the 3 points. First, India is second largest food producer country in the world, but we are facing the problem of food security. Why? And second is that the pandemic, COVID-19 has a lot of impact on the food production, food security, and quality of nutrition food. And it has it has a negative impact on the food security and malnutrition in India. Third, this is most important, food security is a welfare, function of welfare. It is related to basic right as well, but at the same time, we have to think about our culture of food. Yeah, that are your main point, but you raised many questions, many issues. I'm going to conclude saying these 3 points. Thank you for your presentation and thank you, audience. Thank you for giving me this opportunity for the organizers. And it is very difficult task to manage the time. I'm sorry for all of you. I conclude your view and your ideas and in terms of time. Okay. Thank you once again. Thank you, organizers. Thank you, sir. On behalf of the Department of Economics, Gaya College, Gaya, I thank our eminent speakers, Professor Dr. Diwakar and Professor Sridevi, for this session. We truly had an insightful session. The deliberations were exhaustive and kept the audience engaged throughout. Thank you so much. Now, I request the audience to prepare for the first technical session. We'll proceed for today's first technical session. I request the participants who have to present their paper offline to move towards the MBA building, where you shall be making your presentations in the MBA MCA conference hall. Okay. I also request Professor Sudharanjan Singh, sir, former head, PG Department of Economics and Dean Faculty of Social Sciences, Magadh University, Bodh, Gaya, to kindly chair the offline session. I request the technical team to connect us with Zoom link for online presentation of participants.
I repeat, I request the technical team to connect us with the Zoom link for online presentation. Alright. I request the audience to settle down quickly. Offline. My कोना में photo ले। Now I request Dr. Abodh Kumar, Associate Professor, Central University of South Bihar, to kindly chair the online session. Sir, I invite you to the dais to kindly grace the session. If the participants have joined us online on Zoom, just any one of you unmute yourself and say hi so that we can know that you are on board. Hi, I'm Samar. Okay, thank you so much. Hi, I'm Ranvijay. Hi, I'm Yasar Imam. Those who are presenting the papers can also have their videos on. We are ready. We can go to Abodh ji to start sharing the session. Yeah, thank you. We shall shortly begin. Abodh ji, over to you. Mr. Arjun, just wait few minutes. I have to do something. Then we will start. Just wait for 5 minutes. Not 2 minutes. No problem. Okay. Okay, we will continue. Just wait for 2 minutes. I request Mr. Adarsh Kumar Gupta, Bursar and Head, Department of Economics, Gaya College, Gaya, to kindly felicitate Dr. Abodh Kumar, Associate Professor, CUSP. I request the chairperson to formally start the session. I request you to kindly wind it up within 40 minutes. Thank you for giving me this opportunity to chair this session. And in this technical session, I think there are 10 papers will be presented. And the time that has been given to me 40 minutes, I have to finish within the time limit. So in that case, I can allocate 3 to 4 minutes to one participant. I request Mr. Arjun to just inform us how many participants have joined.
We have 6 participants. We have 6 participants. 6. So one participant will get 6 minutes, right? So we can start with Miss Sushmita Chandra. Sushmita ji is not here. I can assist in those who are ready. Abodh ji. Then Nisha, Ranvijay. Samar ji is ready. We can go with Samar Khan ji. Okay. Samar Khan ji, are you ready? Yeah. Hi. Am I audible? Yes. Yes. Please go ahead. Let me present my screen. Let me know once my screen is visible. It's visible. Go ahead. Yeah, sure. Okay. So I'm Samar. Okay, just a minute. How do I do this? Yeah. So I'm Samar Khan. So I'm a data engineer, having a couple years of experience, and currently I'm studying big data management from Griffith College, Dublin, Ireland. The topic which I'll be presenting is edge computing in intelligent manufacturing industry. So before going to the topic, we should know some of the basic terminologies. That is, number one, what is cloud? Cloud is a network of remote servers used for storing, managing, processing data over internet. Edge computing. Edge computing is a processing data near its source instead of centralized data center. Edge devices. Edge devices are connected device that collects, analyze, transmit data at or near the source of data generation. Intelligent manufacturing industry implies the advanced technologies such as automation, artificial intelligence to optimize production process, increase efficiency, and reduce the cost. Akamai is a company which gives the content delivery, which provides the content delivery network, accelerate and secure online content and application. It's just a company. So edge computing diagram and cloud computing diagram. So this is how it looks. In cloud computing, the devices are connected through some networks to the cloud, and the data is processed over here, and then processed data is retrieved to these devices, edge devices, devices. Over here, in edge computing, these devices are called edge devices, where the data is transmitting to the edge, edge processing platform, and then it is stored over here in the cloud. Okay, so the massive data can be processed over here. Introduction. The world is becoming increasingly connected through the computer, through computers and internet, and making our life easier by providing services over internet. However, the traditional centralized approach of cloud computing has a limitation of processing massive amount of data, and in any of the industry, not only in intelligent manufacturing industry, massive amount of data is generated. So processing those kind of data and retrieving those kind of data fast is a big challenge, and that can be solved by the term edge computing. Edge computing is a decentralized computing infrastructure that brings computing and storage closer to the device, reduce the latency, enable faster data processing. Methodology. Okay, so edge computing has its root in the content delivery network developed by Akamai in 1990s. Okay, although it is a new technology, but it has a root in from 1990s. The content network was created, distributed efficiently and quickly
to the user around the world. Moving forward to the present day, edge computing plays a crucial role in the concept of intelligent industry. The manufacturing industry is transitioning from traditional to intelligent. And edge computing is accelerating this transformation. By placing the computing resource at the edge of the production, the response time is reduced and over the efficiency of the manufacturing industry is improved. Over time, the efficiency of the manufacturing industry is improved. The advantage of edge computing is in reducing the time response significantly. By processing the data closer to the source, latency is minimized, which leads to faster decision making and making rapid response time. Additionally, edge computing supports computing at the edge of the production, which allows for real-time monitoring and data analysis. This is especially important in manufacturing process where downtime and delay can be very costly at times. So I hope it is visible. Okay, so it says edge computing for sustainable development. How can it in manufacturing industry can help sustainable development in India? Okay, so edge computing technology can aid Indian manufacturer by streamlining their process, cutting the waste and increasing their efficiency. Utilizing the vast amount of data generated by the manufacturing process, edge computing can enable manufacturer to make real-time decision and optimize their operation. Real-time data analysis can help manufacturers to identify inefficiencies and reduce waste and resource consumption. Edge computing can increase the speed of data processing and reduce the latency by improving operation efficiency. By implementing edge computing technology, manufacturers can increase their bottom line while lessening their environmental impact, contributing to the sectors of more sustainable growth, sectors where sustainable growth is more. Okay, potential benefit for business in India includes reduce the operational cost, increase the productivity, and improve resource management. Edge computing can also provide great flexibility in manufacturing process, allowing more agile responsive operations. Yeah. So there is a market share analysis which is done by many of the companies, which I'll be quoting over here. According to Dell, there are almost 41 billion devices which is connected, and the market sizes of edge computing is 43 billion. Whereas KPMG, one of the big four, is saying that there is a market for edge computing is $206 billion. Red Hat, a good company, has predicted that from 2022 to 2027, there will be annual growth of 37% for in the field of edge computing in the intelligent manufacturing industry. So conclusion. The benefit of edge computing in the industry particularly provides the sectors such as reduced cost, improved efficiency, and sustainability. Adopting edge computing can reduce the environmental impact, increasing the profit, contributing the sustainable growth of the manufacturing sector in India. Similarly, it's a win-win situation for both the consumer and the manufacturer. Thank you. That's all from my side. Okay, thank you, sir. Thank you, Samarji. Next, we can have Diwakarji. Diwakarji, are you ready? Am I audible? Yes, you are audible. Samarji, you can stop the screen share. Please let me know. Okay. Yes, when my Diwakarji, screen you can is go shared. ahead and share the screen. Diwakarji, share screen. Is it visible? Yes, it is visible. Go ahead. Kindly finish your presentation in 5 minutes. Sure.
Okay, go ahead. My topic is corporate governance as a catalyst for CSR, empowering companies to make a difference. In the simplest word, corporate social responsibility is the voluntary contribution of companies to the environment in which they operate. Critics also claim that companies are using this as a PR strategy to build up their reputation, and this is the main motive behind this paper. I want to investigate the claims. Is it true our companies are investing through CSR for a sustainable future? I did a literature review of around 85 papers, 83 to be more precise, and these are the papers I find in line with my research paper. The objective, there are four objectives of my research. And first one is to study the importance of CSR in a developing economy, which is with a special reference to India. The second objective on paper is to explore the stages of development of CSR in India. The third objective of my paper is to identify the expenditure pattern of Indian companies regarding the CSR. And the fourth objective of my paper is to explore the dimension where the CSR helps in sustainable development. This is the null hypothesis I'm going to test to see the direction and impact of total CSR expenditure of the companies on the health and education sector. For the part of research methodology, I did collect a sample from all the 28 states and 8 UTs. And two major sectors of development were taken. One is health sector and one is education sector. This is the CSR contribution of top 200 NEC listed companies from financial year 2015 to 2022. As one can see, a clear growth in the contributed amount of CSR by companies. So my next question is which is also the next part of my research. Where is this money go? Where is this money going? Is there any particular developmental sector? Because by far Government of India classified 40 core developmental areas in which a company can invest through CSR. As you can see, 45.357%, almost half of the CSR amount is invested in these two sectors alone, health and education sector. I did run the SPSS. I did run correlation on SPSS. I used correlation to investigate the relationship between these two sectors, CSR contribution. After running the gathered data on SPSS, I found that there is a significant positive correlation. As you can see, 9.943 and 0.947, and that is 2 on the significance level of 0.001. Means if contribution in CSR moves in positive direction, the expenditure amount of health sector also moves in positive direction. Okay. This is the regression table. The result of regression test also from SPSS, and for the as far as the model concerned, the significance value, as you can see, the p-value is less than 0.5. As the result, the model fit is good, so there is no doubt about the model. And for the independent variable, for the overall model, R square is 0.888 and F is 39.775 and p-value is less than 0.5, which indicates that factor under the study has a considerable influence on health. Furthermore, my R square is 0.88. This portrays that the design clarifies 88.8% of the fluctuation in health sector. Also, this is the hypothesis testing result, where
one can clearly see that p value is less than 0.5, t is 6.307, and r is 0.88, and beta coefficient is 0.205. Means null hypothesis is rejected and alternate hypothesis is accepted. For the conclusion part, there is no if and buts in the statement that CSR is an helping hand. With the CSR program, Indian businesses have assisted in addressing some of the nation's most critical health challenges. They have also been crucial in encouraging education, especially for neglected group. Furthermore, these projects have been undertaken with a focus on the long term, addressing not just urgent need, but also sustainable development. These are my recommendations. It is suggested that Indian businesses form more partnership with government agencies, NGOs, and other stakeholders to guarantee that the initiative have a lasting effect. Also, by continuing to engage in these projects, Indian businesses can help construct a better future for India and its people and contribute further to the nation's development. These are the references I used in this paper. And now I'm concluding my slide. If anyone have any question, please, you can ask. Thank you, Diwakar ji. Very nice and congratulations. Next, we go on to Nisha Kumari ji. Nisha ji. वीडियो ऑन कर सकते हैं? यस यस सर। ठीक है, प्लीज गो अहेड। अगर आप स्लाइड शेयर करेंगे तो। या आई एम गोइंग ऑन माय वेबसाइट। यस, वी कैन सी योर स्क्रीन। यस, ओके सर। Good morning to all. I am Nisha Kumari and today I am presenting on the topic the barriers to the growth of small business in India. निशा जी, दूसरा आपने दूसरे सिस्टम में भी ऑन किया है ना? उसके स्पीकर को ऑफ कर दीजिए। उसके स्पीकर को ऑफ या वॉल्यूम उसका कम कर लीजिए पूरा। ठीक है, गो अहेड। Let's start with the introduction part. A quiet revolution is taking place in India through small industries. This sector has given a boost to the Indian economy by contributing in industrial output, exports, employing of million people, and producing quality products. Over 63 million enterprises spread across the country, contributing approx 30% to the India's GDP. Therefore, small businesses are considered as the backbone of the Indian economy. Although small businesses are considered as the backbone of the Indian economy, we should not forget about the barriers that they are facing today. So for this purpose, the objective of my study is to provide conceptual framework and contribution of MSMEs to the Indian economy, to identify the problem that small businesses are facing, and to provide suggestions to resolve the problems. Now, discuss about what is small businesses. In India, on the basis of their investment in plant and machinery for manufacturing business and investment in equipment for service sector enterprises, MSMED Act 2006 categorizes the small businesses as micro, small, and medium enterprises. Yeah, as you can see in the table, micro enterprises whose investment limit in plant and machinery or equipment should not be more than rupees 1 crore and annual turnover should not be more than rupees 5 crore. The second definitions को skip कर सकते हैं। Objectives और findings पे ज़्यादा stress कर दीजिए। Yes. Okay. The next part is contribution of MSMEs for the Indian economy. Small businesses have driven the India to the new heights through various ways, such as majority of industrial units. In India, the majority of industrial units are because of small businesses.
The next is labor orientation or labor oriented and employment generation. Small businesses generate a lot of labor, and it is the second largest employment generator after the agriculture sector. The next point is its operation is flexible and adaptable to upcoming changes. The next point is it promotes development. The establishment of small businesses in any region or area helps to uplift the lifestyle and earning of the people. And the last point is it also contributing in increasing tax rate revenue. So these slides explain the problems of small sector enterprises. Here is some problem like lack of credit from banks, competition from multinational companies, poor infrastructure, non-availability of raw materials and other inputs, lack of advanced technology, and lack of distribution of marketing that are facing by small businesses in today's scenario. Here is some suggestions. Following initiatives are taken for uplifting the performance of small-scale industries like easy access to credit, 2% subventions of all for all registered MSMEs, e-commerce platforms, procurement of MSMEs, output by the public sector companies, latest technology for MSMEs, but effective implementation of these initiatives can only assist these small businesses to overcome the hindrances faced by them in the competitive environment. So in conclusion, the lack of finance, lack of technology, market challenges, regulatory issues, and infrastructure are the perceived barriers to these small-scale industries in India. The findings of this study suggest that Indian government representative have to look those factors like market challenges, lack of funds, registration and licensing fees, and small business tax rates where they can make a difference. It is also recommended that in India, Indian government at the local and state level take the appropriate action to minimize the regulatory issues. Thank you. Thank you, Nisha ji. Vandana ji, you can come up next. निशा जी आप स्क्रीन रोक सकते हैं. I am ready, sir. Yasar Imam. Yes, okay. Vandana ji, are you ready? Yes, sir, I am ready. Can you see my screen? We can Sir, see your is it screen. visible? Yeah, you can go full screen. Yes, ji, we will come next to you. Please wait. Thank you. Yes, Vandana ji, you can go full screen. Sir, 1 आप minute. इसे वो बड़ा कर लीजिए ना, मैक्सिमाइज कर लीजिए ऊपर से, टॉप राइट के बगल में. यस, उसके बगल में क्लोज मत कीजिए. Sir, actually, I'm just unable to do it. अच्छा, आप इसमें Just नीचे आ जाइए. आप मैं बताता हूँ. नीचे आ जाइए जहाँ yes, जूम, sir. Sir, now it is full screen. Sir, can you see? We can see. Please go ahead. Okay. Kindly be brief. Respected Chairperson and all the participants, a very good morning to everyone. I am Vandana Kumari, Research Scholar, PG Department of Commerce, Patliputra University, Patna. My topic for the presentation is marketing strategies for promoting sustainable agricultural products to Indian consumers. Marketing sustainable agriculture. Yeah. Marketing sustainable agricultural products to Indian consumers can be a challenge as it requires both educating consumers about the benefits of sustainable practices and communicating the unique value proposition of such products. However, the market for sustainable product is growing in India and it presents a significant opportunity for farmers, producers, and marketers to tap into this trend. Here are some marketing strategies that can help in promoting sustainable agricultural products to Indian consumers. First is making a brand image that stresses the health, environment, and sustainability. Second, using social media as an effective tool for connecting the customers and fostering a sense of community around sustainable agriculture. Next is collaborate with social media influencers who are enthusiastic about sustainability. Use eco-friendly packaging. Use of local and regional language to make message more relatable.
and accessible to local peoples, to work with farmers who are engaged in sustainable agriculture, to provide organic product certification, fair trade certification, which can assure Indian consumers who are cautious of only sustainability promises, to promote organic products in store and hosting tastings to get customers try them. Marketers may successfully use these tricks to promote sustainable products and also increase demand for items that are socially and environmentally responsible. Organic farming in India has become increasingly popular in recent years due to several reasons. First one is environmental advantages. Organic farming methods are environmentally sustainable and promote biodiversity. They do not use synthetic pesticides and fertilizers, which reduce the risk of soil and water pollution. Secondly, organic foods are considered more healthier as they do not contain harmful chemicals or residues from synthetic pesticides or fertilizers. Thirdly, organic farming can be more profitable for small-scale farmers as it allows them to command a higher price for their product due to perceived health and environmental benefits. Many farmers in India have been practicing organic farming methods for generations, making it an important part of their cultural heritage. Organic productions and markets in India have a promising future driven by several factors. First, there is an increasing demand for organic products in India as more people are aware of health and environmental benefits. Secondly, Indian government has also implemented several initiatives to promote organic farming, including subsidies for farmers, organic certification programs, support for research and development, and so on. India is already a major exporter of organic products, and there is a huge potential for further growth as organic product is gaining popularity worldwide. And lastly, the organic farming practices leads to better soil health, increased crop yields, and has reduced environmental impact. So, organic farming practices will grow in future also. The socio-economic factors have a significant impact on the marketing of sustainable agricultural products in India. Some of the factors are like the education level of consumer awareness, income level of people to afford premium price, cultural perception of consumers for traditional farming practices, market accessibility of sustainable agricultural products, government laws and policies like providing incentives to farmers and etc. Sales promotions, some of the most common sale promotions strategies for organic agricultural companies are like offering coupons and discounts on organic products can encourage consumers to repeat purchases, bundling practices of selling several things at discount. It is a kind of promotion of complementing organic products. Providing free samples to get customers used to it, offering rewards or discounts to loyal customers, internet promotions and trade exhibitions. The following are some major limitations and difficulties in the marketing and manufacturing of organic agricultural products, like lack of awareness and education, higher production costs, certification process is time-consuming and expensive, difficulties in easy market access due to transportation, storage, and distribution, limited research and development facility. Marketing organic products in India can help businesses tap into a growing market, gain a competitive advantage, improve their brand image, promote better health outcomes, and benefit from the government support. Some of the suggestions are like successful marketing of organic products in India requires a deep understanding of your target audience, effective use of digital marketing channels, collaboration with farmers and suppliers, and a focus on promoting the benefit of organic products. The results and findings are like this. In India, there is a growing demand for organic products, increased consumer awareness and willingness to pay a premium for organic products, effective marketing strategies that combine digital channels and collaborations with farmers, suppliers, and government support for farming. And I would like to conclude by saying that marketing strategies for organic products in India present several opportunities and benefits for businesses.
There is a growing demand for organic products in India due to increasing consumer awareness of the benefits of consuming chemical-free food. By marketing organic products, business can differentiate themselves from competitors, improve their brand image, and appeal to health-conscious and environmentally conscious consumers. Effective marketing strategies for organic products in India include a focus on digital marketing channels, collaboration with farmers and suppliers, participation in events and exhibitions, and promoting the benefits of organic products. Overall, Indian organic market presents a lucrative opportunity for businesses with significant potential for growth in the coming years. Thank you. Thank you very much, Vandana ji. You can stop the share. Yasar Imam ji, are you ready? Yes, sir, I am ready. Okay. Please continue. You can share your screen. Yes. Yes, please go ahead. Yes, sir. My screen is visible? Yes, screen is visible. Kindly be brief. Yes, please go ahead. Yes, sir. Yeah. Okay, so a very warm greetings to all the dignitaries and the professors from the university and other institution from the India, the participants. A very warm greetings to all of you. So today I am going to present my paper that is entitled Modeling Factors Contributing to Sustainable Growth of Agriculture in India using Interpretive Structural Modeling. That is the method of a qualitative research. I am myself, Yasar Imam. I, along with Dr. Zeba Nas, faculty at Aligarh Muslim University Kishanganj Center, and Professor Dr. Anwar Khan, former head PG Department of Commerce, Gaya College, Gaya, has contributed in this research study. So, introduction, agriculture, as we all know that the agriculture is the backbone of India's economy. So nowadays, we have witnessed that the sustainability is a very hot topic among the academia and among the professionals. So each and every individual is talking about the importance of having a sustainable practice in our developing countries, especially the South Asian countries, as far as their limitations are concerned. So sustainable growth in agriculture is essential for the country, for the development. There are numerous factors that affect the sustainable agriculture in India, and understanding this factor is very important as far as developing the effective policies to promote a sustainable growth in that particular field. As agriculture is one of the very, very important sector of our economy. All human activities depend critically on agriculture sector and sustainable supply of foods and other resources to grow to a growing global population. So it needs, we have to deal with the sustainable practices in agriculture while facing the challenges from the climate change, while facing the challenges from the high rate of biodiversity loss. We are facing the challenge due to the land degradation. We are facing the challenge in terms of the soil erosion, compaction, salinization, and pollution. So after especially the Brundtland report was published in 1987, we have started talking about the sustainable agriculture practices. So agriculture is an essential sector of Indian economy. It is almost contributing to 18% of the country's gross domestic product. Agriculture also provides employment to more than half of the India's population. However, despite the significant contribution of the agriculture to Indian economy, there are several challenges: climate change, land degradation. I have already discussed about it. In recent years, there has been a growing interest in identifying the factors. What are the factors that contribute to sustainable growth of agriculture in India? So if we are aware about those factors, we will definitely formulate the policy. Government will definitely come up with a solution. The people will definitely embrace the solution or the factors that will contribute in the sustainable practices. So one approach to identifying these factors is using the interpretive structural modeling. That is a qualitative approach that was developed by the Warfield in 1974 and later on fine-tuned by the professor from Indian Institute of Technology, that is Professor Ziaul and Naseem, as a total interpretive structural modeling. So it is a powerful methodology for understanding complex system by examining the relationship between different component or different factors that
that comprise the system. So let us move. This is the literature review where we have identified different facts. I will not discuss about the literature review because we are facing a time constraint. So it is not possible to discuss about each and every research which is contributing in identifying the factors. So frequently switch on to the research objective. The research objective of the above topic is to identify and model the critical factors that contribute to the sustainable growth of agriculture in India using the interpretive structural modeling approach. Now, the methodology, in order to achieve the objective of this study, ISM is used. ISM helps in identifying the what, why, and how of the association. What are the association between the variables, or you can say the factors, as discussed by the Barfield in 1974 and Professor Sushil in 2012. With the use of available literature and opinion from the expert, a new conceptual model is developed. So the steps of interpretive structural modeling analysis, first step is identification and definition of factors. So in the very first step, the various factors promoting growth of sustainable agriculture identified and defined after doing a comprehensive and detailed literature review. Second step, defining the contextual relationship between the factors. So that the third step, interpretation of the relationship identified in the preceding step. Fourth step involves the pairwise comparison. Fifth step is creating a reachability matrix. And step 6 is partitioning in hierarchical levels. And the seventh step, illustrating with the help of a diagram, and the 8th step is developing an interpretive model. So the ISM model is prepared with the help of a final reachability matrix. The initial reachability matrix. So according to this reachability matrix, we have a variable 1, 2, 3, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, and in horizontal V1. So we are basically analyzing the impact of variable 1 on variable 1. If there is an impact, we can say this, yes. If variable 1 is impacting factor 2, yes, we have mentioned that, yes. And if variable 1 or factor 1 are not impacting, we have mentioned. So this is the whole approach we have followed in initial reachability matrix. So this is final reachability matrix has been created. After having a final reachability matrix, we have created a you can say the partitioning of hierarchical levels. Yeah, this is the table which depicts the how many levels we have identified in terms of creating the interpretive structural model. So the various hierarchical model levels according to which the digraph and ISM model is to be constructed are as follows. Here the level 1 is V1, V2 is a level 1. Here V5, V7 is level 2, and so on. Let us discuss the various hierarchical levels according to which the digraph and ISM model is to be constructed are as follows. The variable 1, variable 2, efficient use of resources, environmental conservation is a level 1 in interpretive structural modeling. Variable 5, that is infrastructural development, and variable 7, that is a technological advancement, is level 2 in interpretive structural modeling. And variable 6 or factor 6, that is customer awareness, is a level 3rd in a interpretive structural modeling. And variable 4, social responsibility, is level 4, and variable 3, that is the government policies, level 5. So this is the particular interpretive structural model have been developed. This is the particular model. So this this particular model at the base, that is a government policies are a driving factors which is creating a kind of the social responsibility among the people, among the person involved in the agricultural practices, or in the social responsibility impacting the customer awareness. And customer awareness is impacting the infrastructural development as well as technological. So these variables, infrastructural development and technological advancement, is considered as a linkage variables or linkage factor. Further, the infrastructural development impact the efficient use of resources, and technological advancement impacting the environmental conservation and efficient use of resources. Yes, sir. This is the final model we have come up with. Yes, sir. Please respect the time. Yes. Okay, I'll just conclude in a couple of minutes. So
this is the emerging crisis. This is the research outcome. The emerging crisis of feeding millions of people and the myriad of problem faced by the agriculture sector has intensified, creating a dilemma between the sustainable practices and modern method of agriculture. Sustainability embraces the capacity of a structure to continue to meet society's expectation for social justice and security, including the intergenerational equity. ISM model clearly depicts the significance of a government intervention. The government intervention has a significant impact, and social responsibility has a significant impact, and the customer awareness has a significant impact on a sustainable practice of agriculture. They are considered as a driver or for facilitating other dependent factors like efficient use of resources and environmental conservation. So this is all about. I have discussed about the identified path. Path 1, that is V3, V4, V6, V5, V1. Part 2, V3, V4, V6, V7, V2, and part 3, part 4. So this is all about. This research paper has employed ISM model that depicts the significance of government intervention, social responsibility, and customer awareness as a driver for facilitating other dependent factors like efficient use of resources. These identified paths suggested that the government policy can play a significant role in promoting socially responsible practices, and that creating awareness among the customer about the benefit of sustainable agriculture. So additionally, advanced technologies can conserve the resources and the environment as well, while enhancing the yields and profits. Infrastructure development also improve the resource utilization. Thank you so much for listening with the patience. Is there any further question? We'll come back to it. Thank you, Yasarji. And now we go to thank you so much. Ranvijay Kumar ji. Thank you. Thank you, Yasarji. Ranvijay ji, are you ready? Yes, I'm ready, sir. Yes, please go ahead. Kindly try to present within 5 minutes. Okay, sure. Am I visible, sir? Is it visible? Yes, it's visible. Yeah. Please go ahead, Ranvijay ji. Yeah, a very good afternoon to all of you, sir. My topic is an overview of the non-performing assets in the Indian banking industry with the demonic proportions of NPAs be tamed. So, first, the introduction part. In recent times, Indian banking industry has faced torrid times owing to soaring NPAs, and the quantum of NPAs in the last 10 years increased from an industry average of 3 to 4% to almost 20% to 25%, and it eventually triggered a panic. The accumulation of huge non-performing assets in bank has severely dented the capital base of the bank. As we all know that NPAs, for every NPA account, we have to put some provision. So that makes a dent on the capital base. And the severity of bad debts was earlier realized only in early 90s, when post-stabilization reforms were initiated. And the magnitude of gross NPAs in banks and FIs is presently over 7.43 lakh crores as of March 2022, which comes to around 5.8% of gross advances. It has also become evident that the major defaulters are the big ticket borrowers. And the banks and financial institutions have continuously resorted to reduce NPAs in a time-bound strategic approach. The objective of my research paper is to study about NPAs and relevant regulations, as well as to evaluate the impact of the various measures on resolution of bad debts of banks. In the research methodology, I have used a descriptive method for analysis and usage of secondary data. So, and first, I would like to introduce what are NPAs. So, in line with international practices, RBI introduced a system of income recognition asset classification, that is IRAC, and provisioning norms from 1993 onwards, based on the findings recommendations of Yasar Imam committee. And that's how we define NPA as an asset which ceases to generate income to the bank. And it is defined as a credit facility in respect of which the interest and or installments of principal has remained overdue for a specific period of time. And further, the assets, these NPAs are classified into several subcategories. So that they are substandard asset, which one which has remained NPA for a period
less than or equal to 12 months. Asset code is 20. And then we have doubtful assets. It has 3 stages, D1, D2, and D3, based on the number of months they retain in the particular category. And then we have loss assets, that is code 40, where loss has been identified by bank or internal or external credit auditors or RBI inspectors, but the amount has not been fully written off. Now we come to the factors responsible for NPAs. There are many factors, but some major factors are diversion of funds for expansion, modernization, setting up new projects, helping promoting sister concerns, basic concerns, diversion of funds from the core area. Then we have time cost overrun while implementing projects. Then we have external factors like raw material shortage, raw material input price escalations, that is the business conditions. Then we have business failures like product failing to capture market, inefficient management, etc. Then we have failure, non-payment of overdues in other countries, recession in other countries, that is the basically factors concerned with external environment. Then we have abrupt changes in government policies like excise, import duty changes, deregulation, etc. Then we have the last one is willful default, where the customer refuses to pay despite having the capacity to pay. And apart from this, the deficiency in credit appraisal, monitoring and follow-up, operation delay and release of limits, these are the factors which are responsible from the bank side. Then what are the reasons for growing NPAs in the current perspective? The soaring NPAs in recent times can be attributed to effects of global recession coupled with internal factors like the slowdown in domestic economy, which had adversely affected the performance of corporate as well as SMEs, leading to a negative impact on credit quality. And another reason was a sudden rise in NPA was due to the shifting of system-based, because when in early years of the last decade, we shifted to system-based recognition of NPAs from that of manual one. And in this FSR report, December 2013, RBI has identified 5 sectors: infrastructure, iron, steel, textile, aviation, and mining as a stress sectors. And PSB is having high exposure to this industry sector in general and to such a stress sector in particular. And increase in NPAs of bank is mainly accounted for by switch over to system-based identification of NPAs by PSBs, slowdown of economic growth, and aggressive lending by banks in the past. Then what are the implications of NPAs? For an economy, the stability of financial system of a nation is wholly dependent on the healthy development of financial institutions, especially banks. The incredible high level of NPAs and FIs has been a matter of grave concern, as bank credit is a catalyst to the economic growth of the nation. And any I request the participant to kindly wind up. Okay. And we cannot afford more participants in this session, maybe in the next one. Due to shortage of time, there has been some slight change. Is the we shall be having NPAs is bound to have a adverse I request the chairperson to kindly wind up the session. Then we come to the brief history of debt recovery mechanism. In 60s and 70s, the soaring NPAs led to passage of SICA Act, and then with the establishment of Board for Industrial and Financial Reconstruction, that is VIFR, the insolvency and bankruptcy matters were relocated away from high courts. The 90s pushed both the government as well as RBI into action, while the government passed the RDDFI Act, where DRTs and DRTs was set up for solving the problem of NPAs. Then apart from that, in year 2002, SARFAESI Act was brought into picture. And then apart from this, RBI has also stepped up its efforts. The CDR mechanism was placed in August 2001, establishing a framework for resolution. Then consequently, nowadays the lenders have been using the following options: 1, resolution through various restructuring mechanisms, and then initiate recovery proceedings in case of NPAs under the extant legal framework, primarily through Lok Adalats, DRTs, and then SARFAESI Act. And then the last one is assignment of debt to ARCs. Then recent initiative taken by the government, then the last indicators were passing of IBC in 2016, and it has helped a lot, as we can see the extent of recovery. Yes, sir. I request the participants to kindly wind up. Okay. We stop the presentation now. Our Honorable Vice Chancellor Okay, and coming to the conclusion. So we are winding up the session. Maybe the next session, okay, participants shall get the chance to present their papers in the next session.
Okay, Ranvijay ji, conclude in 1 minute. Conclude. Okay. No, Okay. no, no, we do not strong have time. We cannot speak much. Just stop. Stop. Okay, sure. Okay. Okay, thank you, I Ranvijay. apologize for that. Thank you. Good afternoon, everybody. I welcome everyone to the last leg, which is the valedictory session of the 2-day international conference on sustainable economic development of India's issues, challenges, and opportunities. I'm highly elated to announce that our esteemed guest, our Honorable Vice Chancellor, Sir, Professor Dr. Shashi Prakash Sahi, Sir, has just arrived. I extend a very warm welcome to the August gathering and our Honorable Vice Chancellor, Sir, on this auspicious occasion. I now invite and request all the dignitaries to kindly grace the dais and herald the beginning of the session. I request our chief patron, So we were having an online presentation of the participants. I request Mr. Arjun, if you can hear me. Mr. Arjun, if you can hear me. Yes, go ahead. Yeah. We have one more participant to present the paper. I request you to kindly connect him and allow him to present the paper. Okay, Ranvijay ji is presented. Niranjan Kumar Thakur ji, are you ready? Hello. Yes, we can hear you. Sir, am I audible, sir? You are audible. Are you ready to present? Yes, sir, I'm ready. Please go ahead, share your PPT. Hello. Yes, Niranjan ji, go ahead. Okay, sir. I am Niranjan Kumar Thakur, Research and Scholar, Department of Economics under Abodh Kumar University, Ara, and my title is Long Run Implication of GST on Manufacturing Sector in Bihar. At first introduction, manufacturing sector have been considered as the producer of the goods since independence. Force on manufacturing sector, many heavy and largest manufacturing units has been established because every economy becomes strong depending on manufacturing sector. Many unit of classified as MSME on the basis of investment and production capacity. Today we have more than 12 million MSME unit in which around 3 million units participate in manufacturing sector. This sector is also leading employment generation sector after the passing of the Goods and Service Tax Act 2017. It was expected that this sector will grow very fast. Manufacturing sector was in priority list. Impact of GST on manufacturing sector earlier. Manufacturing sector which turnover is less than 1.5 crore did not require to any comply in excise department or any other taxation department. After passing the GST Act 2017, all state and central taxes merged into the GST. Now under GST, any manufacturing sector turnover is more than 40 lakhs for normal state which have been registered to comply with GST department. Goods and service tax is major reform in Indian economy. However, from manufacturing sector, GST will bring many positive in a long run period compared to pre-GST system, such as easy process of filing returns, availing of input credit system, payment of tax, interest and fine, which help rest compliance with GST to boost the economic growth and the fast fiscal deficit. Objective is to examine the impact of goods GST on manufacturing sector in Bihar state.
And second is examine the utilization of ITC in manufacturing sector, to study long-run implication of GST on manufacturing sector. Research methodology is primary data collected from and interview conducted from persons either owner of the manufacturing sector of person who involved and handling accounts, CFO, manager, consultant of the manufacturing sector. The study was conducted during October 2022 to February 2023. In this study, random sampling technique have been used, and around 105 respondents were selected on random basis. The study is undertaken in Bihar, particularly in Patna district. Data analysis in table show the demographical profile of the 105 respondents. It reveals that male respondents are higher than female respondents. Measure of the age group 31 to 45 years and graduate in commerce are higher qualification of the person in compared to other educational qualification. Majority of size of unit of the business is small units. Second table is so around 86.66 respondents said the GST registration certificate is issued to obtain. 43 respondents said incurred a cost training providing to employ. 69.52 respondents said cost of compliance increases in comparison to prior system. Our conclusion is the impact of GST on the entire economy need to thoroughly investigated in order to reach a generally accepted conclusion. The introduction due to COVID-19 pandemic affected manufacturing sector during that time. Some unit fully shut down or partially shut down. Total output decreased suddenly and facing many problems challenging like manpower or cancellation of work contract, decreasing demand in the market, lack of logistic issue of raw materials of manufacturing sector. Government have also been more financial support and made easy policy. Can you hear me? Ranjan, can you wind up? Okay, thank you, sir. Thank you. We can go to Anila MG. Yes, Anila sir. MG, are you ready to Yes, present? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can have your video. Session for now. Okay, just a minute, sir. I will. And we'll let you know once we start again. Okay, we'll wind up now. Stay online. Stay online for the proceedings over here. I request all the participants to stay online. Please go ahead. Okay. The next participant may now present the paper. Okay, Anila MG, are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay, you can have your video on if you want, or start with the presentation. Do you have any slides? Yes, sir. I have PPT. Yeah, please share the screen. Sir. Just a minute, sir. Kindly try to wind up within 5 minutes, Anila ji. Okay, sir. Sir, is it visible? It is visible. Please go ahead. My name is
Anila. I'm a research scholar from Kerala University. My topic of presentation is sustainable development and consumption, the role of green products. Let's start from the concept of sustainable development. All we know, Brennan Commission report, Our Common Future, in 1987. The report was published by an international group of politicians, civil servants, experts on the environment and development, and it provided a key statement on sustainable development. That is, sustainable development means the development that meets the needs of present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. The report had alerted the world to the urgency of making progress toward economic development that could be sustained about depleting natural resources or harming the environment. The core idea of sustainable development is that the resources available now is also available for our future generations. Environment is one of the fundamental components of sustainable development. For the achievement of sustainable development, sustainability of environment is necessary. Our world is progressing in nature, but these progresses have a lot of harmful effects on our environment, which causes mainly environmental issues such as global warming, climate change, ozone layer depletion, acid rain, etc. These issues have raised concerns to protect our environment, which has led to the concept of going green. Consumption is one of the cornerstones of social welfare and an important part of people's life. At the same time, increasing levels of consumption is one of the main contributors to the continuing environmental degradation, threatening the idea of sustainable development. The ultimate aim of sustainable development is to conserve the earth. Our earth has limited resources. The limited means and the resources on the earth cannot be enough for the unlimited ones of us. Thus, there is always a possibility of over-exploitation of these resources, which has a negative effects on the environment. Change in consumption pattern has led to overconsumption or unsustainable consumption and over-exploitation of resources. At this juncture, we have to think about the ways to avoid over-exploitation of our limited resources. Consumption of environmentally friendly products or green products is an effective way to do so. Moving to the concept of green products, in a general sense, green or environmentally friendly products are those products which do not harm the environment, whether in their production, use, or disposal. That is, these products are produced in an environmentally sustainable manner and they do not contribute to any harmful impact on the environment. These products have positive effects on the environment as they are less toxic, biodegradable, energy efficient, renewable, due to which they are termed as green products. We can measure green products by following measures: products that are originally grown, products that are recyclable, reusable, and biodegradable, products with natural ingredients, products containing recycled contents, non-toxic chemicals, products contains under approved chemical, products that do not harm or pollute the environment, products that will not be tested on animals. Finally, products that have eco-friendly You can conclude in. Okay. Or we are also having bad connection with you, and there are some suggestions to improve. Okay, but Anila, we can again have your presentation for suggestions. You can stop now, because your connection is also coming weak. And hello. Yeah, we have remarks by VC sir. Anila will come back to you in the next presentation session. We'll just have after that. Yes, Adarsh ji, you can take over from here. Please stop this presentation because we have some urgency. Our honorable vice chancellor sir has arrived. He has to attend this important meeting. So we will start our validity session right now, and after that we will continue as per our schedule. All participants will get the opportunity from all over the country who have joined our meeting. So I request and welcome all of you to join this validity session, although it is